Good evening and welcome back everyone to our weekly scrims. This is the first match for today and on the caster's desk it is me Asuya. Like always, will be accompanied by Itami. Is that you? Yeah, that is me, I guess, for now at least. But okay, thank you for What do the you mean welcome, for Asriya. now? Yeah, I mean, I'm walking man at this point. But anyways, we are back onto the scrims once again, and this is going to be another BO1 between. Okay, there I am. Okay, never mind. First match is going to be between Team Nexus going up against Team Hypermetrics. So Hypermetrics will be the one who will be having the first pick advantage, and this is going to be another BO1 series. So, looking at the drafts and everything, I believe both of the teams they will just be going out with the updated kind of draft that is following onto this patch. There is the priority bands like the Paquito, the Glue, something else like even the support sometimes, and maybe even the golden, but golden is not much of a priority. It is mostly onto the mid as well as onto the EXP. So we'll just see what's gonna happen. Yep, we will definitely be seeing some same kind of bands, the Marcel, might even see an Akai because if you do see, he is in the list of the top three meta heroes right now. He suddenly just climbed back. And Paquito, of course, Phoebus might also make its way. And when it comes to the mid lane, of course, there's the God, as well as the Zushin. So, might be anything amongst that. Then again, talking about the gold lanes, like usually people, they just, first restrict out these OP kind of heroes. And then of the second phase of the ban, that's when we see the carry, the Claude, the Moscow being actually banned away, especially the Moscow Itami. I've been seeing him being a priority pick even in the MPL. Mhm. Moscow, I believe mostly it's three of the goldiness which have mostly been prioritized out right now. That is the Claude, the Harith, as well as the Carry and the Moscow. Actually, it is four, but we mostly see the three of the picks getting prioritized. And gold lane is not the first pick priority, I believe, but still these are four of the heroes which have been mostly picked at least onto the gold lane side. And I guess the fighter gold lane thing is kind of over right now because of the adjustment that happened, and it is completely reliant onto the marksmen, back onto the marksmen. So Harith being exceptional case, he is a mage, but still he does a thing like he once he gets the scaling, he does the same thing like the marksman does. So the bans are going to be pretty much okay. Maybe Team Viper Matrix have done their homework onto the Benedetta ban at least, because we don't see the Bene getting banned out at least onto the first phase itself. I believe she has received some adjustments, or maybe it is the itemizations, but still Benedetta, unless and until there is a Master of Benedetta or something, you don't have to I actually just am ban it out, because vengeance Phobius is still open. You can incarnate. still go out with the Phobius. Now you lead the way to the next Yeah, not to adventure. mention even Muncie is open. He can literally cut out any route for our Benny. But for now, the Sora being in the list, well, I think another good EXP when it comes to giving the sets. But I think one Belleric can counter the Sora pretty easily because if he wants to dive in with the alt, with the crowd control alt, and then he wants to take everyone out with the second skill, it is a Belleric who can taunt you and can literally be your death. I am I'm not really the only surprised the one Akai bound by wasn't these taken away. chains. Phobius, a Benedetta ban from the side of Team Viper, and then a Phobius pick. Even when Paquito is banned away. He is Mhm. overall a good EXP, but then again, My they magic shouldn't flows go in as for the Lucian freely as if the she's wind. open. Light me Oh up my and God. watch Wait, the it's world Vale and an expert. burn. I don't think so. These teams are, going in for the meta. They're just picking up their comforts. Yeah. Whale first priority. I believe like the burst is insane. Once he gets the items as well as once he's able to land the combination perfectly. So Whale is gonna be working out like that. But first pick priority, I highly kind The of doubt immortal one it. chose But me to Viper vanquish the Matrix as well, shadows they that will be plague this following the world. trend, not the trend actually, following what Team Nexus is doing, and they will be prioritizing out their comfort pick as well. Because I have already said it out, it is mostly the four marksmen, and Leslie has been quite of a exceptional kind of a pick. So is the Beatrix. So Beatrix, in terms of the laning, if she is getting poked out, she can use out the sniper to clear out the lanes from a clear distance. So
Beatrix has its advantages as well as the disadvantages is there, because she doesn't scale up like she used to before. Prime Beatrix was something else, and she's not onto her prime, but still she's usable in my opinion. So it depends upon the user as well how well you are able to utilize the hero. And Team Nexus will be the ones Crowned by who could heaven's most probably mandate, going out for the my jungle legacy bans shall apparently this time, endure. jungle as well as the mid lane. So Viper Matrix will be following up with Aroma as well as the okay. It is going to be the jungler as well. Okay, what is it actually? It is the jungler and the roam, right? Yeah. Yeah. The jungle, I mean, the jungler has been picked from both the sides. It's the mage. That's why Team Nexus is just, restricting the mage picks right now because no mage from the side of Team Viper. And of course, roam is open from both I the am the sides. power of light So, incarnate. Akai and Kaja, of Let course, them we play can the go for the hero. jungle as well as I the will be the roam truth this and the world EXP. desperately needs. Okay, Hmm. it is the Exborg on the jungle. Perhaps that's why the Yuzhong has been banned away, but would say pretty pretty comfort kind of picks and bans. The Atlas though still remains open, will be just picked up. But that also, since Team Viper is not picking up those meta picks, they might even as well go in for the Diggy at this point. And Akai has been banned away, so a Cyclops coming up. But what will be the room? Tell me, what do you think? Maybe a Tigreal just to answer back, or maybe a Badang, even a Diggy. Could be the case. Cyclops is onto the mid lane actually because of the Suyo, and it is followed up by a Minotaur. Minotaur, if you don't have the actual idea to how to get rid of him, then I believe he's one of the most annoying roamers, not because of the initiations, but because of the healing. Man, he makes sure that none of your team members are dying unless and until they are close to him. So Minotaur is kind of okay-ish, but at the same time, I believe it gonna be depending upon the synergy this time. So Nexus, at the same time, they still have the jungler to be picked out, and it is going to be the Kumar actually. The Baksha is going to be picked out, and scaling wise as well as the, let's say, the farm speed wise, both of them they are pretty much equal because Suyo as well, right from the early game, he will be able to scale up, and he will be able to dish out some decent amount of damage without even getting the Hunter Strike, just with the Fury Hammer. So it could be quite okay-ish, but at the same time, they have the Minotaur for their side. So if they decide to just go all in, then they will be able to do it because of the Minotaur. So Viper Matrix as well as the Team Nexus, both of the draft looks pretty much balanced, but one combination can actually work out for the side of Team Nexus if they are able to time it perfectly. That is the Veil as well as the Atlas. Yep, definitely. And well, when it comes to the early game, I would like to say that Mino isn't that tanky in the early. You can literally lock him down and eliminate him first. He kind of shines towards the mid to late game where the healing just goes insane. For that, they already have the Baksha, and so Suya is one of those heroes who really needs farm. Heavily depends on the farm. If he gets the snowball, he'll be carrying the game. If he doesn't, if he's struggling for farm, he might fall off. So, if the side of Team Nexus, they might go and they do have this chance to invade Suyu's jungle since they have an Atlas. Atlas damage in the early is way too crazy. They can follow it up with the Expert as well as the Baksha too. I think they have the means, but they're not really going for it, not really committing for it. I think they could have done that though. Hmm, I agree. And this is going to be the first BO1 for the night. It is between Team Nexus going up against the other team that is going to be Team Viper Matrix. So already onto the land of town, these two are quite updated with the patch because they haven't started with the blues yet, and they went out with the green buff instead. So it is going to be battle of the level 4 mark as soon as possible, and it is going to be the scaling game because they have the Leslie against the Beatrix, and lethal ignition on Leslie is one of the things that is actually better compared to quantum boots. You will already have enough movement once you get the rapid boots. You can just go up with it, and I think, like, let's see if she is able to scale up, and the Berserker Fury adjustment, she has been quite of the advantage is definitely there, but she could be the dark horse if she's able to actually farm up well.
And not to mention that she's on the flicker, and towards the late game, if she's caught off guard, if the positioning isn't good, one combo from Whale can literally delete a Leslie. Even though she's strong, because of course she has that voice skill for the mobility and she packs punches towards the late game, she can literally two shot the Beatrix, yeah, especially if she's going with the Sky Piercer. But then again, really needs to be careful from the whale. And of course, the Baksha is already there, right? He'll make sure to climb down onto the Leslie, not let her camouflage. So that combo from Baksha as well as the whale is something you really need to look forward to. And of course, on the flicker, even Atlas is there. So high chances for the Leslie to get caught up. And the turtle will be the one first getting prioritized from the side. This is going to be Aris actually. The Suyo will be able to get it. And they are trying to go out with initiation. Infernal Pursuit being spammed out by the Phobius. But still, the dive in comes up from the Baksha. He is all alone. The Atlas actually will be the one going in. Look at the sustain. It was quite there, but Katsu will be the one able to get the first blood. The snipe from the Suyo is able to get the hit. A 1-for-1 trade, but that is a roamer for an EXP laner. So a win kind of a situation for the side of team Hypermatrix, at least for now, because they still have the lead for their side, and it might just extend. And there you go, Prime Milhan, yeah, Millifian it is. Oh my God, there is the Minotaur as well coming up with the ultimate. Beatrix uses out the grenade bazooka, but Oh. okay, the snipe from the Leslie is going to be enough. One hit, it was away, and it is Skylar actually onto the Leslie. I think we can already see Team Nexus's rotations are not really working out for them. Mino already level 4. Meanwhile, look at Atlas, still level 3. Didn't I mean you wouldn't expect it because by now usually the roamers do get the level 4, but he's just waiting it out in the bush, waiting for some camps, waiting for the marksman so that he can give some side. Even the whale isn't. I think the whale and the Atlas should actually go up together, and I think Whale might get caught off Oh, with the Planetron and a lot of stun coming up as Atlas tries to save Katsu, but of course one hit from the Cyclops gets shredded down, and of course a killing spree for Suyo. I think they're kind of underestimating the damage of a Suyo who has a turtle, who has the farm, who has the gold. I think, the snowball which a Suyo needs, he's actually getting it pretty well, and I do see some lack of synergy coming from the side of Team Nexus. I agree, and this from the studio actually, it's the farm, the itemization, as well as the kill count. He has 5 kills registered for the side of Team Viper Matrix, and at the same time, this is 3 kills already onto the Suyo. So the turtle will be contested from both of the sides, but still, I guess the retribution game might be quite better. Ares gets the turtle once again. Mornian Fury onto 2 people. There is the stun, and the Infernal Pursuit actually comes up from the back line. Mega kill for the Suyo already. He tries to go in for some more, but Krishna will be the one falling off from the hands of the Beatrix. But still, it is going to be a 1-for-1 trade. Once again, a roamer for a EXP laner. The recalls are done. The Veil is able to escape, but once again, Viper Matrix are the one who has the better trade for now. And of course, Suyo is one of those heroes who is pretty good when it comes to securing objectives, simply because damage from the hold is way too much for them. But the Atlas goes in, some stun onto the Suyo, manages to escape. Look at him already. Way too up. We level 8 Suyo. In the bot lane, we do see the Cyclops versus the Xborg. Of course, Xborg will be kind of losing it out. Vale might try to camp with the Cyclops, but Cyclops somehow knows. So I think pretty good map awareness, secure path taken up by the Cyclops. And what to say, I think I do see Team Viper, Team Nexus did have the upper hand in the early if they had decided to go in for some invades, but as I see for now, their only hope might be in the scaling coming in from the Beatrix as well as the Whale because I don't see the synergy, I don't see proper rotations coming from their side. And the lead from the side of Team Viper Matrix as well will just be extending at this point. And Team Nexus, they need to find out a better trade when it comes out on the initiations. As oh my god, the guy is unstoppable already. An off-cam kill onto the Xbox doesn't has the immortality yet, and he will just be falling off onto the process. Baksha tries to go in, but they will be able to get one.
one of the objectives that is going to be the tower onto the bot, so it will be opening up more of the vision. The turtle is going to be up. The Atlas might just go in with the fatal links, but the question is, will the team actually make it on time to make up the engage and get off the kills? Because the kills are just extending for the side of Team Viper Matrix. They are just getting it off, and the turtle as well will be prioritized and should be an uncontested one. Once again, there's the engage. Morning Fury onto three people onto the backside. Fatal Links connects onto Tsuyo this time, but it will be Skylar able to get off a kill. Vale comes up with a combination that is going to be a double for that Leslie already, two for none, as well as the turtle going out for the side. I think Leslie sells the Suyers way too scaled, and I do see them, Team Viper, even have the chance to end this game pretty early. So, as of now, I don't know if Team Nexus don't rotate properly, or, okay, Vale getting stuck down out there, Atlas comes in clutch just for the help. We just decided to go after Vale instead of taking down the mid lane. First year, I think they should have just taken down the turret instead. Could have opened up the map for them. Meanwhile, the top first tier has been taken down too. No, Abitami, I'm really surprised that Atlas is so strong in the early, such an aggressive tank, but I don't see Team Nexus playing Atlas as they should. The aggressiveness isn't there. Maybe another reason is because uh, Atlas with an early game mage who can dish out a lot of damage can actually give pretty good follow-ups. Meanwhile, it's the whale who will be going off. Oh, Oh, meanwhile off cam, we do have Suyo finally getting taken down by the Baksha, a shutdown. A ray of hope for the side of Team Nexus. maybe it could be the last insanity also being used out by that Borg to escape. But on the bright side for the side of Team Nexus is going to be the Suyo actually going down onto the process. There is a gold lane battle going around. Fatal Links won't be connecting. The combination was there, but it didn't connect onto Skylar. He was able to escape with the flicker right on time. So that was then a resource for a resource, but still you were able to save up your life. So it's definitely worth it for that Leslie. And looking at the scalings, actually, Skylar also has three of the kills already onto his name. So, if he's able to extend the lead as well as extend the kill count, then it would be favorable for the side of Team Viper Matrix. Once again, the Atlas won't be connecting with the Fatal Links, but this is going to be a shutdown. Finally, Morning Fury comes up from the Minotaur, but that is going to be a complete dive from the Suyo, and Katsu as well as Colgate will be the ones falling off. Suyo hasn't actually stopped out yet. The Lord is yet to be contested out from both of the sides, and still Viper Matrix does has the advantage as well as the game onto their hands, at least for now. Pretty good flank coming from Suyo, and Atlas not tanky enough at this point. I think Leslie's kind of farmed up. She will be shredding, especially when there's also a Cyclops who is pretty strong, I would say. When it comes to dealing continuous damage, cooldowns are way too low. I think, after the buff Cyclops received, he's kind of broken. I think another secretly broken mage. The only point is that he doesn't have, the true damage kind of potential which a god has, and the range too, but then Max its Xborg once again uses up. The shield's gone, and of course it is Suyo who can literally chase you down. Who is just trying to extend the team fight, jumping around. It's also the Cyclops who also follows up. Suyo dishing some damage onto the Beatrix, just moves away, uses up the second skill for now. The entire team is gathering up, but I think we should just head back because the Lord is also secure, and the Lord is just going up from the top lane. Meanwhile, it's the Atlas with the Fatal Links and the bomb are coming in from the Beatrix. A lot of damage, but it is not enough to secure that kill onto the Cyclops. She got a bit too greedy with the flicker, gets taken down by the Suyo instead, and Krishna takes down the Baksha. A 3 for a 0 trade, and Ekborg also comes up. I think this is a very bad decision because you will just be sandwiched between four members and another kill for the Suyo. Instead of stopping the Lord, why is the expert coming up there? I think he was actually trying to clear out the lanes, but it completely backfired onto their side. The lead is almost going to be almost over 10k, and the Morning Fury won't be connecting out this time. The flicker was also used out, and it was a waste of a resource, but still, the bright side is Viper Matrix are still leading onto the game, and they still have the leads for their side. So, for Viper Matrix, actually, the thing is like, the Suya was the one who got the first shutdown. He was taken down, and after that it was Skyler. But if you look at all of the players, the Cyclops is still yet to be taken down. So
it is pretty much looking like if you are able to get out one of them, the other one is still yet to be taken down. And the Minotaur is also the same case with him, but he won't be having the bounty. But at the same time, the healings are going to be insane. So they are not lacking when it comes out onto the damage resource. But at the same time, Team Nexus, they still are yet to get a proper kill as well as a proper shutdown from either of the sides. There is the Fatal Links. Once again, the Beatrix comes up with a combination, but sadly there is no follow up. A monster for this, so you already Morning Fury onto the backline, and that is going to be another kill. Skyler gets it. And it is going to be a double for Dazuya. Might even be a triple. Uses the flicker, but he won't be able to escape, and that is going to be a triple kill. 4 for none. Once again, Viper Matrix will be leading out onto their side, and it is only the Xborg actually remaining out to defend the base. He might not just be able to do so this time. Has the Firaja armor, has the shield, but still the sustain is way too much. They completely dive on to him. Firaja armor being taken down. The Atlas is coming up for the Fatal Links, but they might just not be waiting out for the end. Viper Matrix with the dominating display as well as the game for this side. I would say a very one-sided kind of match, simply because I think there was, the vision was good from the side of Team Nexus. They had an Atlas, they had a Whale, they even have the Beatrix. I think all of them can combo together, but the issue is if you can. And we didn't see a proper synergy, maybe even some lack of communication coming from the side because Atlas needs, a really aggressive early, and Will needs to follow up behind the tank, but they are very scattered around the map. Even the rotations and the map control was completely in the hands of Team Viper, which got them all the, I would say, everything onto the map, every objective, every kill. The synergy was way too better, and of course, after getting the flask, the healing from the Mino just goes way too much. And just like I said before, Leslie with a Sky Piercer, like 40 stacks onto the sky, she was literally shredding you down at this point. So I would say this match pretty done for now. And with this, we will be going in for a short break. Do stay tuned because we have a lot of more matches to come.
Well. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome back. This is the MOBA Warmup class series back again with another week. Now, again, day one has gone of this week, and again, coming back today, we are opening up to best of ones. The teams have only one chance, and today it is going to be one of the new teams who are here, along with the teams who are already practicing at the scrims. Let's see what is it going to be. But before that, let me introduce myself. It's going to be PT along with Sarah. Hello, Sarah. How are you doing? There, it's been a while since I joined you all, but yep, finally here tonight again and glad to be back, honestly. As for how it goes for the side of these teams, Will of D and Arling ML, they're both rising underdog teams, so we will be in for something Among the pretty planes interesting. exists And the what equilibrium, happens in which these I was underdog made teams for. is that it's actually pretty fun to see how they draft because most of them try and adapt to the ongoing metas and they experiment to see what's best for them. And that is exactly what we find better to watch in a way than seeing those same drafts coming in Different from, perspectives certain expose teams the Yeah. every same single truth. time. Definitely true. And also, given the fact that most of the teams are in for a bit of, comfort plus meta, and since the meta is ever changing, we will have to know how it will be going. Look at that, Eve out of the way, along with an Atlas, Marcel, understandable. These are the team fight Butterflies heroes, a born little bit by of a thy wish, disruptor, and guarded I by like lantern's how there is light. no tank jungle getting banned. So, Will of the, are you guys gonna go in for an Akai or possibly a Phobius as the first pick? That's the thing. So far, it's the meta bans. Obviously, Atlas is one of those new highest pick rate roamers into the position that is required for most of the situations, and that is the main important situation to be watching out for. Crowned by These heaven's teams they mandate, my don't legacy shall like endure. focus so much on the The meta. southern They seas also are kind of my consider their comfort domain. picks as well. But while that's happening, we do need to keep in mind that the comfort picks here, as far as we can see, is definitely going to be the Kadita versus the Zetian. Obviously, the Zetian wins it out for now, and what happens is in that situation is that the Kadita can actually find some leverage into targeting down the goal laner Now Akai enters the scene. when the Zetian has her passive alive. And when the passive is alive, it is difficult to catch her down, and that's when the Kadita comes in and marks down your goal laner. In those situations, it's actually pretty fun to watch. And for now, we can see the Akai getting picked up, one of the most meta junglers at the moment. But he is going to be receiving a nerf very soon, Peachy. So I think those tank jungler players need to watch out. Definitely. I feel like, he's been picked out a lot, definitely had a very boost in the pick rate as well. And on top of that, I could say the same for the Bakshia. Now, again, to get a counter for the Valor Akai, and a Bakshia royalty could in be a there. dead But the only body. downside is you won't be having a I bit am of the a hard power of light crowd control incarnate. like the Akai. But All Willow who D dare really stand trying in my to, way will be amp up devoured. and try to go for something different. And Arling ML really put the Akai on the flex. Really love that it is going to be a tank on the Akai. He's going to be setting up for the Kadita. But hey, Hanzo versus Leo mod really is going. This match is really going to be interesting. Whoa. If I'm not wrong, that okay, that's an Akai into the roam position. Now, I am Uh, not sure how well that works, but if it does, then it's actually a pretty good trade because Akai roams is one of the better sustained roams other than the Atlas at the moment. The only thing that can counter Akai's ultimate is probably the suppression, and even that can get cancelled out with Now you lead the way just a to the little bit of next correct adventure. timing. Now, in that situation, the side of Team Will of G needs to watch out quite a bit, and if that happens, then they are in bit of a risk. The Kaja pick I like here with the suppression, like we mentioned, but the problem is that they do not have proper burst for the Kaja. ooh, Kaza. Let's see though. Again, there we I've still been have quite waiting a for few too heroes left, long. and for My Willoughby, they kiss are grants still you banning out those team immortality fight heroes. or Understandable, death. EXP laners are getting targeted right there. And with that, a
Hellcut does gets banned off. This is actually very new though for me. I have not seen an Hellcut getting picked or even banned in such a long time. And on top of that, maybe they are trying to, get a ban on it, given the fact that it could be a very good counter for the Hanzo to try to locate his body as quickly as possible. Because Hellcut's ultimate gives him a little bit of a movement speed, Anad, and him being Sancho. onto the roam or even an EXP laner is such a good addition. But though there is the frontliners, especially the roam as of now, looking quite strong enough. So the haircut is still a 50-50 for me. Even if you don't ban it, it's still fine. But will of the what is it going to be? They need an EXP laner. I would really love to see an Arlet. Good Night crowd sky control tells can all. deal the setup, Chivalry but is they don't want to go dead, in for the setup. and I will revive it. I mean, as far as my guess goes, the Hellcat ban is just a comfort ban at this point. Like Yeah. they do not want to give the comfort pick to the side of Team Arling ML. And honestly, that is one of the clever tactics to go in these kind of situations. And it honestly works out for both of these teams. And Hanabi pick. Now, this is something I Oh. personally would not agree to, but Oh. that is my personal opinion. And as far as my opinion goes, it's pretty, you know, it's pretty Aw. meek. But then again, as I do like the draft from the side of Team Willoughby slightly better, just because of the fact that they have a good balance of the early plus the late game. As for the side of Erling ML, their draft is like fully 100% based off of comfort, and that honestly is kinda, yeah. Let's see though, it's 5 seconds half till meta the versus enemy reaches comfort the into the battlefield. land of dawn. Smash Here them. we go. 10 players all are ready to take away the game. Arling ML being very new, we would love to see what kind of a gameplay that they will be putting in, because Assam Alpha goes in for an Sun, which is still a very new thing. And oh no, they need to stop the Hanzo. Will he be able to? Oh, wait. Almost. Maybe the first blood, and yeah. Nicholas gets the first blood. That is too aggressive without a tank. Indeed, I know, right? That's exactly what I said. It's pretty aggressive coming in from these teams, and they do get a decent amount of engages so far, and the early lead is definitely cooking right now. And that's then genuinely a very good fact for both of these teams. And Like, for now, yeah, it's fine for them. definitely. Look at them. Lito taken away by the Leomord. He's just trying to get a farm up now. Again, Hanzo really needs the snowball. As much as I have seen the Hanzo gameplay, it really depends on how much skills that he gets and how fast he gets his items. And on top of that, there is also one kind of a gameplay that we could be expecting. The Hanzo goes in first. He loses his, blood body, and his teammates will be the next charging in. If that is going to be the case, here Hanzo is just going to be a bit of a support. Kaja really That's what. doing a great job on trying to bait it out. Nicholas level 4, look at him. Phantom Steed goes in for the Kadita, but onto the same note, there's a Petrify Oh, and a okay. jump from Herman getting a kill. Will of T takes up 2. They're trying to go in for 3. That's going to be the Hanzo who has just not reached level 4, flickering out of the way. That's going to be the Kaja safe because they are playing onto their enemy's jungle area and they are going to get the loss. Indeed, and that's what I told you, right? Too much of comfort also is not good, especially because of the fact that all three of their damage dealers are Trinity based and they need a minimum of 10 minutes to scale into the game. Now, that is not a good sign when the enemy is picking up early heroes like the Leomor and the Clint. And look at that, what a beautiful ultimate coming in from the Zaytian and onto the bottom side. They are already finding as many kills as possible. Will the Leomord commit? That is the question. They do have a Zaytian to finish him off, and that's exactly what they do. Will of they are able to divide the resources at the top and the bottom very equally, which is a great sight to see. Taking away the turtle as well, they are farming up, trying to create a goal gap as early as 2 minutes into the game is really a insane thing to do. So let's see if they're able to keep up, because once it does goes to the late game, Will of the will start having to have a bit of a problem. But the question is,
will of the let Darling mlbb go towards the late game onto the bottom lane once again. Assam Alpha, even though there is a bit of a level difference, we are yet to see what is it going to be. A bit of a knockup for Nicholas. Wait a minute, he pops up his horsey. Look at that. Akai as well as Kadita trying to scatter for some protection. That's going to be the kill onto Nanakai, but the knockup right on time. Nicholas, who just jumped in onto the turret, will be losing his health to Kadita. Wait a minute, that's not a good way to go. And Kadita will be losing his life. A bit of a suppression comes in, but onto the blood body, that was just not necessary. But hey, the protection was there. Yeah, that's what. And the whole early advantage that mlbb is getting right now, even the goalie is almost a 4K into their hands. And right now, once the tower shields have fallen off, I'm pretty sure they're going to be focusing on the towers, so the what's it called? Our Hanabi and Sun do not get any farms, and this guy, this Sun, the monkey player, doesn't get his chance to go and rotate onto the side lanes. Oh, okay, Clint in a bit of a danger there. Kalita uses up the ultimate, but okay, not enough damage. Akai misses out onto the heavy spin PG, but Leomord doesn't miss his horse though, and he definitely gets a kill right under that tower. And look at them. I like how Assam Alpha is trying to, go in for the window of opportunity whenever Herman is not there on his lane. And this is where he can actually do something, take away the farm. But hey, Karita Das gets a kill, will be taken out in a revenge as well. A mage for a tank is something that I don't like that. But Nicholas, with the Phantom Speed, he tries to go in for the opponent's buff as quickly as possible because he realizes that his enemy is also doing the same. Assam Alpha with low end mana, he's losing his life. Look at that, flickering out of the way. He seeks refuge in the turret, but that doesn't stop there. There's going to be a bit of a Fury of Phoenix. It doesn't stop them right on track, but hey, the kill was there right perfectly on time. Why Song Crow also loses his life at the top lane. This is not looking good for Arling ML, who are very behind in goal right now. Indeed, they're actually not showing up their weaknesses. Beside the Will of D, they're not showing any weaknesses whatsoever right now. And somehow, Arling ML, they just aren't able to keep up at the moment. The early damage that's coming on from even the Akai having a Petrify here, I feel like is the issue because he's going to be so squishy for the first 5 minutes or so. And that's exactly the issue. And right now, Hanzo went in for some sort of an invade, but failed at it. Definitely did not make it work. And now, Team Arling ML, what can they really do to try and come back from this? Wait a minute, 6 minutes and Clint gets a bounty that is just too much kills that you have given him into the hands of marksman. If that kind of gameplay is kind of mirrored for the Hanabi, they could have done something, but Harman just gets a taste of the rough phase. He is just right there. But wait a minute, Kaja does get knocked out at the right moment, taken down. Once again, the Nicholas tries to goes in for something, but he does gets met by the heavy spin. Sun, he's also trying to do something right here, but no, a bit of a push and pull onto the Akai. He will be falling down. The tank for a tank, really good, but Arling ML, they are also trying to find at least some SS there, especially for this Hanabi. One last turtle, I do believe, and look at the gold which is soaring quite high. Oh, Nicholas, I really love this Kadeta who's trying to go under the very right moments, but always taken down so low. They're trying to find that's just a suppression, and will he be able to survive? And yes, he was able to survive. A bit of a retribution, he won't be surviving that. And Akai unable to do anything. He dashed in to close the gap, but in a way, he did not get the crowd control. That was really not good. Assam also pops up his flicker in a response to a safety mechanism, but mid lane not looking good. A bit of a petrify combo along with the heavy spin. Look at that, Nicholas trying to get pinned down, and yeah, Mingo Flamingo getting a kill. Nicholas fallen down. They're trying to go in for more. Wait a minute, overextension might not be it. There's the Karita who thus gets interrupted, and Assam Alpha will be falling down. The amount of pressure Will of the are putting in is uncheckable. Look at them, they are just not stopping, and once again they want to go in for the Hanabi who pops up a shield at the very
very wrong moment. And there comes the divine judgment onto the Akai. They know they could take down the Akai, so why not go for that? Hanzo unable to do anything. Indeed. And at the moment, I feel like the side of Ireland ML is just falling apart because their front line has been killed so many times by now that the other side of Will of D, they have just way too much farm to try and counter anybody who tries to show up. As for the side of Arling ML, their Hanabi isn't getting enough farm, the sun isn't getting enough space to rotate around the map, and that's being the exact issue as to why they're unable to deal any kind of damage whatsoever. And when that happens, they are definitely in a bit of a pinch because look at that, the moment they get out of their river area, even their own river area, they are getting bursted down and picked off as fast as you can imagine. And that is the whole problem of this game right here. Hanzo trying to get some damage output, but definitely not getting any of it. No, Hanabi, why would you pop your Aegis right in front of a Esmeralda? She's gonna take all of your shield and possibly your HP as well. But Team Will of the really interested to take down the Lord onto their hands. Filmy Eggs, the scraps, the lost kill. Okay, a little bit slow response right there. He's trying to pin down Nicholas, but no, there's going to be a futile attempt right there, but it doesn't stop. There's going to be the Hanzo who's trying to do something. A bit of a knock up from the Sakai. Nicholas will be finally taken down. The Bingo Flamingo, the man who has the bounty, is gone in. Yes, a double. Let's He's go. looking for more. Yes, one more. That's a maniac. Go in. I know you have a little bit of a low mana. You're trying to save it up, but hey, I do believe the time has just passed in. They're trying to go for the sun, but sun with the flicker. I feel like, you know, even though the flicker has 120 seconds, why does he get his flicker so quickly? I think it's got to do something with the emblem. Maybe they built up the what's it called again? The pull yourself together, the one which reduces the flicker cooldown and the ultimate cooldown. It's all possible. Oh, Gadita, you almost got the queen, but you can't get all of them. And a beautiful Fury of the Phoenix coming in from the side of Will of D. They are going in for more. They want more in this game. They want the bloodbath as they are trunking down the Nexus. They're pushing forward. They get the tower immediately and take a win for themselves. Crazy victory going down into the hands of Will of D. What a game that they have shown. Absolutely dominating right from minute one, and I do believe the Hunter should have just not gone in. They might have gotten a few kills left and right, even though it was just too early. But you know, once the snowball started racking up onto the other side, it was just not stopping it. The side of Will of D really showed no weaknesses, as you mentioned, Sarah. They were not giving up anything for their opponents. Kadita really played it out very well with the limited resources that she had. Like 4 kills on you, that's like 90% of your whole team. Indeed. And as far as the results show, we can kind of clearly see what the issue was, I feel like, in this game. And as that happened, honestly speaking, this team, they just dominated since the minute one. And that's pretty much it for this game. And I feel like we should be taking a break pretty soon. And we will be right back after a short break.
welcome back, ladies and gentlemen. And this is going to be the third match of the day. Back again at the MOBA Warmup class series. This is going to be the Wednesday. And ladies and gentlemen, don't forget the registration for the Saturday is up. So do join the Discord, and also there's going to be the link right there for the website to get join in and register your team. We love to see new teams, new faces coming up here and talking about the new. We are not getting a new team, but we are getting the teams who are actively practicing. So let's see what is it going to be. Almost Pros versus Wailing Goals. And Sarah, once again, Almost Pros are on a 5 winning Butterflies streak. Will they born be by thy able to make wish, up for guided today, by making lantern's it the light. sixth? I mean, you know, it's quite possible because of the fact that we usually see Different teams who have perspectives gained the expose the momentum same these days truth. win it out in these There's no kind of time to situations chit-chat. where they are facing a new team, but A they are punch for also a a new team, punch. but with momentum. So of course, momentum matters in these kind of situations. And I've I been feel waiting like for too Team Almost long. Pro, since we mentioned the 5 win streak, they have definitely got it for Come on, themselves. Dexter. When It's that our happens, showtime. it definitely works out for the side of both the teams in a way, because like the team without the win streak actually gets to learn something out of the game, while the team with the momentum obviously has a easier time. That's what I mean to say. But Now if judging Akai from the draft enters the itself, scene. Jushin, God, and Gary Ban, Gary's still considered as one of the best goal laners at the moment, though we can say the fact that she probably didn't need to be banned so early into the draft. Other than that, the varied goals have taken out Claude as an answer, along with the Paquita My and the mission Marcel. Now, is to these protect two lives. I like, and the first pick, Akai, can actually be countered if Team Valiant Goals Everything can play engulfed in against it. Otherwise, flames. it's a pretty strong pick. Definitely. And as we have seen, Arling ML putting Akai onto a flex. Maybe this Kai, maybe this is also the same situation right here. But I would really love to see a Akai onto the run, despite there being a Waleed. Waleed is gonna be a bit of a annoyance, definitely for the tank jungle. But what if they do switch up for a Leomord or Time even and an tide assassin wait such for as the no Suyu? man So let's see if nor that's gonna be a girl. case or not. While Carry as well as the Claude Now taken you out. lead the way to the Beatrix next will be adventure. right there. I do remember the Beatrix as well as a Sora being such a comfort pick for them. So we may be expecting legendaries or legendaries, but will Valiant Ghoul actually give them the good answer? Because even I do believe even they realize that they also have to win. This land is our That's the homeland, thing, and and it will soon be honestly, our for now, burial I feel ground. like Team Valiant Goals need to kind of step up with their draft decision making, because, as far as I can see, Team I forgot again. I forgot the name again. Hold on. Yeah, the side of Team Almost Pros. Yep, they are drafting pretty well right now, and if they continue My this kind of a kiss draft, it's going to grants you be faring immortality pretty easy for or them to death. win it out in the early phase of the game. They're going on for a full combo wombo. The Sora goes in for the ultimate, and then he gets backed up by the Beatrix Rocks Rocket need Ult, and no then the Kai comes protection in for from the the pin down. rain. So the Beatrix can also possibly target a kind of shotgun gameplay if it works out for herself. And if that happens, then definitely the side of Team Almost Pros are taking this win into their hands. Let's see, what is it going to be? Lapu Lapu right there as a pick, but talking about the ban so far, it's gonna be a Kimmy. Understandable mid lane, really strong. That too against a Waleed. You can just clear off the lanes, try to go towards the other lanes, and if you pull up with kills and your Sky Piercer stats, that is going to be really working into your favor. Almost pros going in for a counterband. Love that, but at the same time, how much can you do a counterband? Something that is really annoying since the team almost pros are trying to indicate that they might be going in for a tank jungle. The Fredrin should be a last ban here. I kind of agree with you there, because yeah, you do not really want to give the currently one of the best junglers into the hands of the better teams, and if The Immortal One you give it chose me away, to you're just vanquish making the things harder for shadows that yourself, I plague feel this like. world. So in that kind of a situation,
the side of team the Valiant goals, they would not want to have that kind of a disadvantage for themselves, that too which they create with their own hands. See value in me? And Oh. You when that should. happens, it's actually a difficult situation for both of the teams because your comfort picks gets banned and but no, look at that. We give away the Fredrin. We just ignore everything. You know what? I really don't like a Fredrin pick against any tank I have a jungler because Fredrin has Sanjo. that edge, has the advantage of Malachi having the enters the tankiness on scene. his side, having the crowd control, and then also having the damage as well. But talking about the Akai, he has only the crowd control. Damage, I would say maybe like 25%, 50% less than a Fredrin, but wait a minute. I think there's a bit of a bug with the UI, but Valiant rules. Are they actually committing to a Zilong, It's a not long, to a interesting. marksman lane? I mean, can't debate, can we now? Because as far as we can see, there's also double Akai, but yeah, that's actually just a Hayabusa. Yeah, okay, fine, thank you. As far as the draft goes, definitely almost pros have got it in their hands. The uh, Hayabusa can literally solo everybody at this point into this draft. The Valir can be countered, the Zilong can be countered. The oh wait, is that? Oh my goodness, that is that a Lapu Lapu into the you know goal lane? Wow, I am shocked. They have definitely switched up a lot. Kaze kind of did not get the timings on his hands, while Kyoshi will be getting level 2 as quickly as possible. But yep, I really love how the Zayton did jump in to help because that was really needed for Kaze right here. But hey, Sora versus Lapu Lapu. Once again, they are trying to make sure that the buff will be saved up, but I don't believe it is already into the hands of Leo. Let's see what is it going to be. While the almost pros are really trying to take away everything possible. Oh, once again, high lots still taking on too much damage. Indeed, that's the disadvantage of having a high loss into the early game. Your early game gets kind of messed up, and I mean, that's not a good thing when your enemy has so much of momentum into their hands and also the bit of the lead. We can see the early pressure being created towards the side of Team Valiant Gold, but the Valir is still doing quite a decent job. Sora does have the Thunder Fist ultimate though, and he gets a kill already onto Kiastit, doing so much for his team. Gets a double, dodges the Apprentice Rat, gets a triple. He's trying to go in for a Maniac, and he's actually gonna get it right under 2 minutes. That's the earliest Maniac I think we have seen in this tournament. Definitely, Leo. My goodness, what a gameplay. Everything was set right in front of him, and he knew how to capture them. With that, he's going to level up very quickly. Look at the counterpart. He's a level 6. And talking about Lapu Lapu level 3, that is 2x of what your enemy who has just taken a Maniac. I would really not recommend taking a 1v1 right there because he is definitely going to win. But almost pros will. I mean, they can do a 1v2 situation, what they are aiming for because Leo is just regening, goes in for the unstoppable, gets a double. He is really unstoppable right here. Look at this, itemization as well. First one to get an item as quickly as possible. This is crazy. Kaze, once again, trying to steal up everything possible from Kiyoshi, who is already suffering a bit of a loss. Look at him. He is not able to farm up. And on top of that, it's going to be Zeng who's just going to provide the support because he's the one taking on damage. Okay, Kazi tries to go for key stash, but no. Zeng Tusk goes in, try to pin down. There was a good stun from the Zetian, but Zeng is the first one to fall down. There you go. Kazi Tusk gets taken down. That's the O2 for you. And almost pros overextending right there. Without Leo, will be suffering losses. Oh, that's got over Razor with a shotgun. My Okay. goodness. But hey, I do see the vision, okay? Why they took something unorthodox and Mm, such a fake that is not you know. preferred even in ranks. Exactly. Now, that is definitely kind of interesting because you do not expect the Zilong to be doing well in these kind of situations, and surprisingly, the Zilong is
doing well. 202. Mind you, that is a very good KD for Zilong into the early game. Oh no, but the Sora somehow escapes from his situation, but the Akai is going to get caught out instead. So a bit of exchange of kills going on between these two teams. And as that happens, again the pressure is coming in from Valiant Goals for the mid side. Who said, who said a Zilong cannot be winning his game? Definitely, even though the team Wailing Ghouls were suffering losses in the early game, they have picked up. They are trying to go for a bit more as well. Almost Pros are quick on to the turtle. My bad, that's going to be Valiant Ghouls. Kyoshi takes it away, but will be met by the heavy spin. And there's a bit of a stun. Okay, Leo, he touched it with his dark form. Gets two, but Kaze gets one as well. Lapu Lapu will not be able to close the distance. Razor takes one and will be getting a kill as well. Wait a minute, Lapu Lapu, he jumps in, not quite sure why the decision, even when he was low. Kiaze almost taken him. There was a bit of a chase, but I do believe the chase will be just cancelled out given the fact that Kiyoshi needs his buff more than a kill. Oh, okay. A retribution onto Mari Biscuit, who steals away the purple buff right in front of Kiyoshi. Kiyoshi is not happy. Look at him for the chase. He's trying to go in for the more. And Oh even before he could pop his appraiser red, it's a shutdown onto the front lane. VO. He's trying to deal some damage. That's going to be O2, who will be met by so much damage. Someone stop this guy, Razor. Looking quite slow. He will be taken down. And overextension is the only problem for Almost Pros. Yes, that's exactly what I feel as well. And the fact that Almost Pros had so much of an early draft into their hands and they're kind of just throwing it away for some reason, and that is not a good sign to, be showing. And when that happens, your team kind of loses the morale, and these people are, in their own world just talking it out amongst themselves for some reason. And as far as that goes, I feel like for now it's pretty debatable as to who can win, because if the Beatrix gets her kills and gets some farm for herself, then the issue will be created for the side of Alien Goals. But as far as that is concerning, the Zilong is also a pretty good counter for the Beatrix at the same time. Oh, look at that heavy spin. Pins down two. There's the key. Kiasesh who's trying to deal some damage, but Kaze goes in for the double. He is getting up his farm. He is getting those items as quickly as possible, given the fact that Almost Pros are on a 16 kills right there and taking down almost 2 to 3 turtles onto their hands. This is looking good. Now, once again, we'll have to see into the mid lane. Oh, more than mid lane. It's the bottom lane where it's long with the 1v1. Trying to go back as quickly as possible. Crazy stuff that Valiant Ghouls are actually coming in. I was kind of surprised to see Zilong, but I can see the vision. Yep, that it is. But into the mid lane once again, there's a bit of a stun. Kaze is trying to go in for more. Pops his ultimate, but no, there's not enough damage. Flicker for Mari Biscuit. Wait a minute. Leo Johnson, what a setup for his team. But the team are trying to pin down the Lapu Lapu. There's going to be the Zilon who jumps down the back lane, trying to get two. And yup, he does get two. But oh, make it three. He gets a triple kill. I mean, he knows where to Wow. go in, and he is just regening his health up. And Leo finally gets a shutdown. Too much death cam. I mean, too many people. I think we kind of, forgot the fact that this is India, and literally comfort picks matter so much more Yeah. than what the official meta is, and that's exactly what this Zilong is showing us right now, honestly speaking. And as that happens, I feel like the side of Team Valiant Goals might actually win this, and if that happens, then that's going to be a major, major upset, breaking a 5-win streak into the scrims, and that is genuinely something huge.
Crazy. Zilong was got out of the way at the very right moment, but losing turrets is just not it. Almost pros are leading in terms of turrets. Look at that. Mari just get taken down without the passive. You should be playing it a bit safe. Kyoshi does get stunned down. There's a bit of a damage, but they know Zilong is trying to come in from the back. Let's see, he comes in, he jumps in. There's going to be a kill. Unstoppable. Plus a double. Beatrix really needs to reposition herself. Like, I kind of get it that your tank is giving up a very good setup, but you need to think about the circumstances that the mage as well as the marksman, in this case the Zilong, is really trying to target you as well. Okay, wait a minute. Leo, he is trying to get back with his dark form, and he realizes 1v4 or even a 1v3 situation is not in his favor right now. Indeed, that is the whole problem of this game because both the teams are kind of not wanting to give up no matter what. And when that kind of a situation happens, you are in for a very good fight between both the teams. And that's exactly what we are getting to see at the law. That's going to be the glorious path coming in. Sora gets 1-2, gets 2 into his setup, will get the ultimate. The Fredrin takes away the Lord though, and Kazi is going to get 2 in the middle of it. Valiant Gold steal the Lord from their enemies' hands, and what a beautiful play coming in from them. Upraises Wrath right there, goes in for the Zank. You know, I'm really starting to notice whenever Zilong jumps in towards the team fight, he is definitely dropping bodies. Look at him. He's trying to play it safe given the fact that team has used up quite a lot of resources and lacking team members. He's just playing it safe. So the turret is a way to go. Top lane, Kyoshi, you need to go clear the top lane so that there will be a bit of a synchronization of your minions. Mid lane cleared too quickly, I believe. But Zilong versus Razor once again, and that's going to be Razor flickering out of the way. He pulls up the shotgun, and the timing is not in the hands of Razor. He needs the flicker plus the wind of nature as quickly as possible. Beautiful, beautiful work coming in by the side of Team Valiant Golds. 23-20 is the scoreline, and as far as that counts, we can definitely see the side of Team Almost Pros kind of falling behind. Oh no, no, Zetian, you gotta back off! Fredrin comes in at the right moment and is trying to do something into this game. Can he is going to be the question, and he's safe for now. As for now, Valiant Goals, they just need to be pushing forward, and they aren't exactly pushing forward at the moment. The Lapu Lapu quite low there. Zilong goes into the backside, and even he gets the triple actually with the help of his teammates, even though he gets taken down. And even Time said, let us freeze and respect the Zilong for his gameplay, and that is exactly something we would have wanted to see. Like I told you, whenever he enters a team fight, he is dropping bodies, triple, double. Wait a minute, there's gonna be Leo who's trying to deal some damage to the lead. He's trying to go for a chase, but that chase is futile. The slow is really, really bad for him. And on top of that, the team, I do believe they are facing a bit of a network issue. And now that we are already at the late game, they need to pull out something. Almost Pros really close down towards their inhibitors. Kyoshi, that is too much overextension. You are committing the same mistake Almost Pros are doing and dying right before the Lord. Just 20 seconds. This is not looking good. This is actually not good because look, if the Hayabusa gets poked out so much before the Lord comes up, then the side of Valiant Goals will actually have an edge. But the Hayabusa is somehow right now not performing as well as he would have wanted to. Even the Beatrix is getting just absolutely, like, what do we even call it? He's just getting killed. And what's it called is these people are just crazy. And oh, look at that, the Beatrix. Oh no, you get taken down again. Lapu Lapu trying to sustain as much as possible. Hayabusa, he gets taken down too. Zilong manages to escape out of the situation. Hylos absolutely zoning the Akai and the Zetian away from the team fight. And Team Valiant Goals should be able to find that Lord without any issues.
You know, Sarah, I am really frustrated for Beatrix. Like, whenever I see Beatrix getting targeted by the Zilong, like, my blood pressure rises. But wait a minute, Celestial Twilight. He's not over. He's trying to go in for the bravest fight, and the Lord Oh is no in no contest no! right now. Oh, Leo, he gets back. That's going to be Kiyoshi who takes away the Lord. Once again, Almost Pros is trying to recover what they have lost. Kiyoshi really going in for the appraisers that gets Mari Biscuit looking quite low, but will he be able to survive given the fact that he does have the mobility? But what about the people? No way, O2! Like, his map sense is really good. Like, he knows when Beatrix is gonna come in and he really targets the Beatrix. Only 11 deaths on her. That is crazy. Wait a minute. That's gonna be the bully getting a kill as well. Okay, I like the taunt. I like the taunt as well. But the Lord is coming in. He was getting so chased down, but somehow he managed to escape as much as possible, and his teammate even finished off that kill. So I think that's definitely a commendable job done by both of these people. And honestly speaking, that definitely works out for both of these teams right now. And here, as far as we can see, the Lord is going to be charging in pretty soon. And when that happens, the side of Team Valiant Goals can just push forward with that Lord. And Almost Pros, they somehow managed to take it down. But even as that situation is going to be coming in, both the teams still need to watch out. Akai gets a kill right there, but I mean, he gets killed right there, but he still manages to escape it out alive. Fury of the Phoenix, Sora gets a double man setup. He's going to get the stuns. Zilong absolutely above finishes the back line again, goes in for the Beatrix. Even the wind is not going to be helping him out. Hayabusa gets a double, and that's going to be a double for Zilong as well. But Hayabusa make it a triple. Leo gets a shutdown out of the Zilong, and finally, 4 members of the side of Team Valiant Goals are taken down already. No, Wally, just run away. You just got spotted on. There comes the shadow as well. I do believe 2 seconds left for the cooldown, but no, not again there. Just wait. No way. Why would you come out of the burst? No. Okay, safe. Safe for now. But Team Almost Pros are pushing down. They are trying to take as much as minions with them. They are saving it up. Look at Akai, who's going to be taking down a bit of a damage. Will lead alone along with Celestial Title save up the mid turret. It is quite possible because Almost Pros really don't want to go in for the extra time right there. They don't want to overextend their time, and Almost Pros crazy. Even though that this just happened, they managed to not get their crystal down. So let's see what is it going to be. They're waiting it up. There's going to be the Lord very soon, and Valiant Ghouls as well. They have been the ones taking too much resources onto their hands, and now that talking about the items, I do believe everyone will have almost everything rather than just like one defense item which is still left. Zank, he's trying to save up his back laners, because the back laners are every single time are vulnerable against the Zilong. Wait a minute, Zank does get stunned up. He pops up his ultimate. There comes the stun from Mari Biscuit as well. Wait a minute, Revitalize popped too early, and that is going to be for Celestial Twilight. Lot is here. Is going to be Valiant Ghouls who's charging in first. So let's see what they are trying to do. Wait a minute, Zeng, though, he's trying to open up a bit of a way for his team. No, he will be taken down. Leo, on the other hand, 50% of his HP taken down. That's going to be the Zilong plus Kyoshi, the Fredrin, melting away the Lord. Bravest fighter onto the minion. They just want to clear those minions quickly. Will Valiant Ghouls be able to end this game with this Lord? Let's see if they are able to do it or not. Now that there is no inhibitors, the minion pressure is going to be a lot, while Kiyoshi is trying to get the lane synchronized very well. So mid lane, quite a lot of pressure. Top lane, same pressure that's jumping in. Bottom lane, that's going to be the same coming in from Kiyoshi as well. Lord jumps in from the mid lane. Zilong, I'm waiting.
Zilal knows his position. He's trying to make sure to get Razor, but he's waiting for the right time. There's going to be Zenk who's taken on too much damage onto the back lane. Zygo's Celestial Twilight for the Mari Biscuit. Pops up his flicker inside the turret. Oh, and that's going to be the death for him. He buys out a bit of a time. There's a Petrify combo onto the Zilal. But onto the same note, there's going to be the Leo who is trying to get the Lord down. Kyoshi goes in for the stun, the Oppressor Rat right on time. Almost taking down Mari Biscuit. No, there is an immortality going off. Wait a minute. Razor does get targeted by the Zilong. That's a triple kill onto him. And the winning streak will be broken down because Wailing Ghouls are the ones picking up the victory. Indeed, we underestimated them. But hey, look at that. It's actually the Zilong with the MVP of this game. And who would have expected? I don't think anybody really would have expected that kind of a gameplay coming in by these teams. And that's honestly so fun to see these kind of gameplays coming in by newer players where they just pick up their comforts and dominate the entire course of the game. And I think that's one of the reasons why these kind of teams are going to make it somewhere far in the long run. But hey, Peachy, I feel like the side of the team who had the 5-win streak, they could have played it out a little better. Yup. Like, there was a bit of a network issue as well onto their side, so that was really inevitable for them. But at the same time, Razor was targeted 13 times. I think this is the highest death in the scrims as well. And the tank, the Zenk, really needed to pull up. The tank onto Akai was really good, but crazy matchup. It was not in their favor. Yeah, But that's the whole problem. I feel like it was just not in their hands after a point, and they tried their best. I'm sure they did so well. They went ahead, they went and got some kills for themselves too, but unfortunately they couldn't make it. But I guess that's it for game number 3, Peachy, and we are going to be taking a break and we'll come back soon.
गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं एसटीजी में साथ रहेंगे शिनरा फॉर द गेम नंबर 4 एट अलगैम्बो Esports मोबा वार्म अप क्लास सीरीज वीक 28 डे 2। आज वेडनेसडे के समय पे मोरियन रॉयल्स वर्सेस एआरएक्स का ये गेम होने वाला है। मोरियन रॉयल्स दे आर नोन इन द कम्युनिटी, पहले इनकी नाम मैं अगर गलत नहीं हूं तो फिर क्लब था, उसके बाद उन्होंने चेंज किया मोरियन रॉयल्स पे। और अभी देखते हैं किस तरीके का खेल दिखाते हैं। लास्ट टाइम वो BO3 सीरीज अगर आपको याद होगा शिनरा भाई, वहां पे मॉरिन रॉयल्स ने मैच जीता था 2-0 से। तो आज उनका ये BO1 है अगेंस्ट ARX। तो किस तरीके का कमाल दिखाते हैं। ड्राफ्ट सेक्शन पे हम आ चुके हैं। मेटा या फिर रेस्पेक्ट, क्या लग रहा है आपको? थोड़ा देखने वाली बात होगी। बात की जाना थोड़ा सा मेटा भी थोड़ा सा चेंज होता हुआ हमें दिख रहा है। अकाई वगैरह इन सब के ऊपर थोड़े से हल्के हल्के नर्फ आते हुए दिख रहे हैं, जिसके कारण अकाई का जो है ना बेसिकली अभी एक चीज किया है कि बेसिक अटैक का डैमेज थोड़ा बढ़ा है। बाकी उनकी जंगलिंग स्पीड जो है उसको थोड़ा सा कम किया जाएगा। फेटरिन की बात करें उधर भी थोड़ा सा आया हल्का सा नर्फ। जो जंगलिंग स्पीड है बेसिकली वो थोड़ी सी स्लो डाउन की गई है, क्योंकि नए रोटेशन से अगर बात करें ना तो बहुत जल्दी लेवल 5 हो जा रहे थे टाइटल से पहले भी। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसको एक बोल सकते हैं कि रोकने की कोशिश की जा रही। थोड़ी यूटिलिटी के ऊपर थोड़ी सी जो फ्री हैंड दे रखा था उसको थोड़ा सा पीछे खींचने का प्रयास करते हुए दिख रहे हैं नए पैच पे। और बात करें अभी यहाँ पे तो टीम जिस तरीके से वो पिक्स लेते हुए दिखेंगी वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज जिस तरीके के पिक्स यहाँ पे हमें आते हुए दिखेंगे या तो क्लॉड होंगे या तो फिर वो कैरी हो सकते हैं, क्योंकि फ्रंट लेनर को गिलाने के लिए आपको ऐसे हीरोज के ऊपर थोड़ा सा मार्क तो लगाना पड़ेगा। अब देखिए कैरी यहाँ पे बैन कर दिया गया है, उसके साथ साथ मॉस्को यहाँ पे बैन किया गया है। तो कहीं न कहीं वो आपकी एक रणनीति दिख रही है कि एमएम को ज़्यादा टारगेट करना है आपको। आप थोड़ी-सी टैंकी लाइनअप के साथ जाते हुए दिख सकते हैं। और उसी के साथ एटलस पहला पिक यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। ओके, पहला पिक यहाँ पे एटलस उठा लिया है। टीम एआरएक्स के पास यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ऑप्शन बहुत सारे हैं। डिग्गी आप उठा सकते हैं। पूरी तरीके से काउंटर को एटलस जो है यहाँ पे जो है एटलस को पूरी तरीके से आप काउंटर कर पाएँगे। और भी ऑप्शन बहुत सारे आपके पास धीरे-धीरे जिस तरीके से आएँगे। तो लेट्स सी किस तरीके की जो विंडो है वो ओपनिंग यहाँ पे होती हुई दिखेगी। टीम एआरएक्स की तरफ से वो पिक्स कौन से रहने वाले हैं। फिलहाल उनकी तरफ से अगर बात की जाए तो चलिए अकाई उसके साथ-साथ बेट्रिक्स यहाँ पे उठा लिया जाएगा। बेट्रिक्स मैं कहूँगा कि थोड़ा वेट कर सकते थे आप। बेट्रिक्स की जगह आप कोई दूसरा हीरो पिक करवा सकते थे। गोल्ड लेन को थोड़ा सेफ लेन की तरफ रख सकते थे। क्योंकि आपने बेट्रिक्स अब पिक कर लिया, जिसके कारण यहाँ पे ना उनके पास एक ऑप्शन रह जाएगा खुला बहुत सारे एमएम्स का, जो ईज़िली बेट्रिक्स को भी अच्छा खासा बोल सकते हैं कि अपनी लेन पे अच्छा खासा जी सकते हैं। और ये देखिए पकीतो का आगमन होता हुआ दिखेगा। उसके साथ-साथ वेलेंटीना यहाँ पे उठा ली जाएगी। और वो यूटिलिटी जो है अकाई का कहीं न कहीं उनके ही अगेंस्ट में, यानी कि वो हेवी स्पिन यूज़ करते हुए देखना चाहते हैं। तो लेट्स सी यहाँ पे किस तरीके की जो स्ट्रैटेजी है वो ज़रूर बनती हुई दिखी। लेकिन रूबी का आगमन यहाँ पे होता हुआ दिखेगा। ये थोड़ा नया यहाँ पे दिख रहा है। रूबी काफ़ी समय के बाद बात की जाए यहाँ पे एसटीजी रूबी के ऊपर जो थोड़ा-सा आप बोल सकते हैं कि चेंजेस किए गए हैं। इनको बेसिकली सस्टेन टैंक से अभी बना दिया है फाइटर। तो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसके ऊपर तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि लाइक रूबी अभी फाइटर में जो है अच्छा खेल रहे हैं। उनकी डैमेज आ रही है उनके पास, बट वो जो सस्टेन पहली वाली थी वो नहीं है उनके पास, जैसे कि आपने बोला। एंड द रीजन इज दैट कि अगर आप टीम फाइट में इनको ले रहे हो तो फिर वो उतना ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से लगेगा डैमेज EXP अगर आप सोच रहे हो, आई एम ऑफेंडेड को एक सेटअप की तरह सोच रहे हो, तो फिर आप ले सकते हो। बट एट द सेम टाइम आप सस्टेन पे ऊपर थोड़ा सा जो है डाउन रहोगे। पांडा यहाँ पर मौजूद है तो कहीं न कहीं वो फ्रंट लाइन का काम करेंगे, लेकिन अभी आपको पांडा के साथ जो है मथिल्डा या फिर सपोर्ट नहीं ले सकते आप। आपको लेना पड़ेगा कुछ टैंकी हीरो। लेकिन एज़ पर द रीसेंट पैच जो आया है शिनरा भाई, आपको अगर पता होगा, तो जो यूटिलिटी जंगलर्स है उनका फार्म, उनकी जो जंगल क्लीयरेंस कैपेसिटी है उसको थोड़ा-सा लो कर दिया गया है, जिसके कारण एक छोटा-सा जो है डिबफ आप बोल सकते हैं या फिर नर्फ बोल सकते हैं हुआ है ये सारी यूटिलिटी जंगलर्स के ऊपर। तो किस तरीके से अभी इस न्यू मेटा पे ये काम करता है वो देखने लायक होगा। MSC से पहले वाली हम देखते हैं कुछ छोटा-मोटा आता है पैच, एंड ये वो छोटा-मोटा पैच था जो थोड़ा-सा लाइक चेंज करके गया है गेम को। पर फिलहाल के लिए पकीतो का पिक यहाँ पर मोरियन रोल्स की तरफ से आता हुआ, लेकिन अभी भी चांस है इफ दे वांट्स टू गो मोरियन रोल्स यहाँ पर कहीं न कहीं बराक्स जंगल ट्राई कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो। बट टीम ARX मेरे हिसाब से कहीं न कहीं रूबी की जगह यहाँ पर आर्लॉट आता ना, ज़्यादा सही रहता। अकाई के साथ आर्लॉट का एक कॉम्बिनेशन बनता है, बट समहाउ हम देखते हैं कभी-कभार किसी की पॉकेट पिक होती है। तो इसीलिए शायद से पॉकेट पिक के हिसाब से यहाँ पे रूबी पिक किया गया है। Crowned by heaven's mandate, जी, my बिल्कुल। legacy और उसी के shall साथ यहाँ पे endure. देखिए मिड लेन की तरफ आते हुए दिखेंगे ज़ेथियन।
रेतिन एक सेटअप के तौर पे यहाँ पे ली जाएंगी। उनका जो फीनिक्स और फ्यूरी है वो काफी ज्यादा मैं कहूंगा कि यहाँ पे काम में आने वाला है, क्योंकि एटलस जो है एम्बुश करके आ सकते थे और लाइक आपको जो है पकड़ने का कोशिश करते, जिसके कारण रेतिन का जो पैसिव है बेसिकली वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा हम यहाँ पे एटलस को पीछे पुश बैक करने के लिए। और यहाँ पे देखिए फिर थोड़ा सा वो डिफेंस गिराने के लिए, वो सस्टेन करने के लिए बालमंड का आगमन होता हुआ दिखेगा और उसके साथ साथ फ्रेया फ्रेया पिक। ओके, इसके ऊपर बात की जाए तो काफी अच्छी तरीके से चलती है गोल्ड लेन पे। बोल सकते हैं कि इजिली काफी सारे एमएम्स को जो है बोल सकते हैं कि विनिंग लेन हीरो है, इजिली वहां पे उनके अगेंस्ट में खेल सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे कूफरा का आगमन, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को कि कूफरा की तरफ से वो इनिशिएट आता हुआ दिखेगा। और लाइक यहाँ पे बात करें टीम एआरएक्स की तरफ से, आई थिंक इन्हीं का ही मैच था एसटीजी लास्ट टाइम जब कूफरा की तरफ से इनके हमने जो सेट्स थे वो देखने को मिले थे, ट्राई एंड रेंज वगैरह। मुझे भी वही लग रहा है कि इसी के कारण जो है यहाँ पर ये पिक हुआ है। बट लेट्स सी कि किस तरीके से खूफरा काम देता है, क्योंकि फ्रेया को हाँ आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोक सकते हो, बट बालमन वो आपको दिक्कत देने वाले हैं। लेकिन डैमेज वाइज यहाँ पे सिर्फ बालमन एंड फ्रेया ही है, आई मीन सॉरी पकीतो एंड फ्रेया ही है। बालमन यहाँ पे एक यूटिलिटी का इस्तेमाल करेंगे, बट एट द सेम टाइम वैलेंटीना यहाँ पर कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं टायरन रिवेंज फिर द फीनिक्स इतने सारे अल्टीमेट्स के साथ उतर सकते हैं। लैंड ऑफ डॉन पे स्वागत करना चाहता हूँ मैं एसटीजी शिंडा के साथ। मॉरियन रॉयल्स बनाम टीम एआरएक्स का ये गेम। मॉरियन रॉयल्स के पास एक प्रॉपर सेट ऑफ कॉम्प काइंड ऑफ पिक्स है, और अगर आप बात करें टीम एआरएक्स की, वो थोड़ा सा लेट गेम कॉम्प की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन उनकी लेट गेम तभी शाइन करेगी जब बीट्रिक्स को मिलेगा वो प्रॉपर स्पाइक। देखते हैं विक्टर क्या यहाँ पर कुछ कमाल दिखा पाएंगे गोल लेन पे, लेन टू लेन मैचअप अगेंस्ट के। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आते हुए दिख रहे हैं वो जंगले, थोड़ा सा प्रयास करें फटाफट क्लियर करने का। दूसरी साइड पे देखना पड़ेगा, पोक आता हुआ दिखेगा एटलस की तरफ से, एक बढ़िया टॉन्ट वहां से आया, फ्लैंक करके आए पीछे से। और मीच का जो पैसिव है ना वो आपने बहुत जल्दी निकाल दिया, जिसके कारण अब वो बहुत ज्यादा वनरेबल रहेगी, तो उनको थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। बात करें बॉटम लेन की तरफ तो वहां पे भी थोड़ा सा लेन को होल्ड करते हुए खेलेंगे, और फ्रेया जो है काफी अच्छी तरीके से वहां पे डोमिनेट करती हुई दिख रही है। दूसरी साइड की बात करें तो बालमंट वो भी आते हुए दिखेंगे, लिथो का जो है वो लेने का प्रयास करती हुई दिख रही है। दूसरी साइड पे मेज को प्रहार होता हुआ दिखेगा, बाउंसिंग बॉल का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा डैमेज देने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे बालमन। वो गोलम चुराने का प्रयास करते हुए दिखेंगे, अंदर की तरफ जाएंगे डैमेज देते हुए, और ये स्पिन लगातार घूमते हुए उनकी तरफ से वो हील आता हुआ, लेकिन अकेले यहाँ पे फंस जाएंगे। फ्लिकर का इस्तेमाल करना पड़ेगा और खूफरा बाल बाल बचते हुए निकले यहाँ से, 1 एचपी पे बच के निकले और उसी के साथ गए रिकॉल स्पॉन की तरफ। और बात की जाए जो कॉम्प है बेसिकली यहाँ पे वो काफी अच्छा है रॉयल्स की तरफ से, क्योंकि आप नोटिस करें उनके पास डिफेंस है, उसके साथ साथ उनके पास डिफेंस ब्रेकर है, उसके साथ साथ उनके पास ना लाइक सस्टेन भी अच्छा खासा है। डैमेज की बात करें यस उनके पास रहेगा, बस उनके पास एक चीज की कमी है, वो है रेंज। रेंज की कमी होने के कारण यहाँ पे उनको लीड गेम में दिक्कत आ सकती है, लेकिन उससे पहले पकी तो वो जाएंगे अंदर की तरफ, बस करना चाहते थे लेकिन पूरी तरीके से नाकामयाब। लेकिन अकाई ऑलमोस्ट यहाँ पे अपने ही टीममेट को मरवा दिया था, फ्लिकर वहां पे फोर्स करना पड़ा, जिसके कारण रूबी वहां पे पीछे बची, नहीं तो वो भी धाराशायी हो जाती। डेफिनेटली देखते हैं फिलहाल क्या होने वाला है इस गेम पर। लग तो नहीं रहा है कि यहाँ पे जद्दोजहद ज्यादा रहने वाली है टीम यू नो मोरिन रॉयल्स की तरफ से, बट एट द सेम टाइम ये लीड जो मिली है अभी 1 किल का वो बहुत ज्यादा इफेक्ट डालने वाला है। फिलहाल के लिए एक फाइट लेती वही यहाँ पर डकी को मिलेगा ये टर्टल, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से टॉर्मेंट करते हुए फ्रे अंदर जाएंगे, पैसिव नहीं मौजूद, विक्टर कर गेट द किल देयर, फ्लिकर के साथ पीछे हटे। बहुत ही बढ़िया 1 for 1 का ये ट्रेड, लेकिन टर्टल खोया है टीम मोरिन रॉयल्स। जी बिल्कुल, और वहां पे बढ़िया तरीके से फ्रिया ग्रेविट पैटी को जो है निकालते हुए दिखे। उसी के साथ जो टीम है यहाँ पे थोड़ा सा वापसी की तरफ आती हुई दिखेगी, वो गोल लीड जो उन्होंने एक बनाई थी ना वो अब बराबर पे आ गई है। अब उसको आपको दोबारा से स्तर पे लाने के लिए एक फाइट अच्छी खासी जीतनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको एक अच्छा खासा सेटअप देना पड़ेगा, और सेटअप के लिए आपको अपने जो प्लेयर्स है उनको रेडी करना पड़ेगा। डैमेज डीलर की बात करें टीम एआरएक्स की तरफ से ना, वहां पे सिर्फ जो डैमेज डीलर है मेज तो दरअसल पोक के लिए रहेंगी, जो असली डैमेज डीलर है वो बीट्रिक्स ही रहने वाली है, और रूबी भी एक तरीके से बोल सकती है थोड़ा बहुत डैमेज तो जरूर वो देती हुई दिखेंगी, लेकिन जो मेन डैमेज है वो बेट्रिक्स की तरफ से आएगा, और देखते हैं कि वो कितनी जल्दी फार्म होंगी। बात करें बेट्रिक्स की तरफ से, वो शॉटगन उनकी तरफ से जब वो डैमेज आता है ना वो बहुत ज्यादा आता है, एम्बुश की तरफ पकड़ सकते हैं, दिक्कत हो सकती है, अंदर की तरफ जाएंगे, बंसी बॉल का इस्तेमाल और उसी के साथ चेन टुगेदर का इस्तेमाल किया, लेकिन पीछे वहां पे फ्रिया वो सीधा टारगेट किए एमएम के ऊपर,
और सीधा उनको फिनिश ऑफ कर दिया। देखिए वापसी की तरफ आती हुई दिखेंगी और यहाँ पे डिनाई किया जाएगा उनको। हैवी स्पिन का इस्तेमाल किया, पीछे की तरफ गए, सक्सेसफुल नहीं रहने वाले इस बार। दूसरी साइड की बात करें तो रूबी वहां मौजूद है, वेट कर रही है, लेकिन पकीतो वो लेन कट करते हुए जाएंगे इस समय और वहां के जो मिनियंस हैं उसको ले लिया जाएगा। अब रूबी अपने ही टावर में रहेंगी कुछ देर तक, जिसके कारण पकीतो को फ्री बोल सकते हैं कि यहाँ पे रोटेशन आता हुआ मिलेगा उनकी तरफ से। और देखिए एक और किल यहाँ पे मिलेगा। काफी अच्छा खासा फाइट यहाँ पे होता हुआ जा रहा है और बोले ना गेम अब थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। पहले यहाँ पे टीम ARX की तरफ वो बढ़ता हुआ जा रहा था, लेकिन टीम यहाँ पे बात की जाए रॉयल्स की तो वो भी वापसी की तरफ अभी आ गई है। डेफिनेटली देखते हैं अभी फिलहाल के लिए कैसा क्या कमाल दिखाने वाली है यहाँ पर टीम मोरियन रॉयल्स। राइट नाउ टीम आर्क्स वो थोड़े से डेफिसिट पे चलते हुए स्किल्स इकोनॉमी के साथ, पर टर्टल लिए थे पिछली बार डकी। इस बार भी डक कोशिश करेंगे कि इस टर्टल को अपना बनाया जाए। सोडू कुरोसाकी जो है वो यहाँ पर कोशिश कर सकते एक प्रॉपर सेट देने का, लेकिन आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब टर्टल फाइट हुई थी तब रिट्रीब्यूशन जरूर लगा था, लेकिन सेट नहीं मिला था कुबरा को। राइट नाउ द टर्टल विसिनिटी से ऊपर आता हुआ यहाँ पे डांस शुरू हो चुका है। लेकिन सीधा और मफेंडेड यूज हुआ है, साथ ही साथ एक सेट आता हुआ यहाँ पर पीछे का स्लेट होता हुआ वो टर्टल अगेन मिलेगा डक को, लेकिन बालमन इस बार इनिशिएट करेंगे इस फाइट को। बीट्रिस गोस डाउन, सो डू द रूबी एंड नाउ द चेजिंग डाउन वैल्क्री सेट। अंदर जाएंगे विक्टर, उनके पास वो फ्लिकर मौजूद नहीं है, बट gonna get the kill, goes back immediately। और ये देखिए थोड़ा सा पे टॉट आता हुआ डक बहुत ही कम एचपी में, क्या वो टॉर्मेंट हो जाएंगे जी जरूर पकीतो पे द किट कैट। और यहाँ पर बस्ट आता हुआ वैलेंटीना पीछे हटते हुए, उनके पास वो लिंक मौजूद। जेकियन gonna use the fury of the phoenix, but इस्तेमाल इतने अच्छे से नहीं होने वाला है। रिकॉल कर गए एट लास्ट। बिल्कुल 1 सेकंड से बच गए यहाँ पे। अगर 1 सेकंड पहले वो अल्टीमेट आ जाता तो कहीं ना कहीं वो धाराशायी होते हुए दिख सकते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे बालमन मौके का फायदा उठाएंगे। ब्लू यहाँ पे उठा लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे पकीतो वो किलिंग स्प्रे लेते हुए जाएंगे, मैच को फिनिश ऑफ कर दिया गया और काफी अच्छे तरीके से सस्टेन करते हुए जा रहे हैं। अब बात करें यहाँ पे पकीतो के ऊपर कि चल नहीं पाए यहाँ पे रूबी जिस तरीके से चलनी चाहिए थी। आई थिंक वो दिक्कत पता है कहाँ पे आ गई, जहाँ पे वो बालमन पिक हो गया। अगर बालमन की जगह कोई दूसरा जंगलर होता ना वो भी हैंडल हो जाता है। बालमन के साथ दिक्कत ये आ जाती है कि आपको टीम फाइट के लिए अगर आप अंदर की तरफ जाएंगे ना तो लगातार कंटिन्यूसली डैमेज देता रहेगा। और जब से उनके ऊपर थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया है, आप उनको एयर बॉर्न भी कर दो तब भी उनका जो सेकंड स्किल है वो लगातार घूमता ही रहेगा। सिर्फ उसको जो है सप्रेशन से रोका जा सकता है। अगर सप्रेशन नहीं है आपके पास तो फिर आपको जो है कंटिन्यूसली डैमेज वो पड़ता ही रहेगा। और वो हील उनकी तरफ से जो आता रहता है भाई वो भी काबिल तारीफ रहता है। तो बहुत अनोय रहते हैं, उनको गलाने के लिए आपको मेज के तौर पे अगर लिलिया वगैरह होता ना तो आपकी स्थिति थोड़ी सी अच्छी हो सकती थी। जेटन की तरफ आप गए थे वो सेट बनाने के लिए, लेकिन अगर चंगलर आपके पास होता डैमेज वाला तो वो अच्छी बात होती, वहां पे आपका जो बन सकता था। लेकिन दूसरी साइड पे ये देखिए अंदर जाएंगे एटलेस, टाइम रेंज का इस्तेमाल जरूर करेंगे, थोड़ा सा और डिले करने का प्रयास, और डैमेज जरूर पड़ेगा उनको, लेकिन पीछे से बचते हुए आएंगे वल्कैरिटेशन का इस्तेमाल करते हुए और फिर फ्यूरी यहाँ पे लगेगा जरूर डैमेज देने का प्रयास करते हुए अभी भी, लेकिन वो बाकी तो सैनफ्रोड वहां पे मौजूदा थे और सीधा बर्स्ट डाउन करेंगे। बहुत ही अच्छा खेलते हुए इस समय 5-1 का केडीए लेके घूम रहे हैं और मजबूर कर दिया टीम ARX को ना थोड़ा सा पीछे हटने के लिए। मिड लेन भी पुश हो चुका है, जंगल एक्सपेंशन आपका और ज्यादा खुल जाएगा। फार्म जंगलर को अच्छे खासा मिल नहीं रहा है इस समय और कहीं ना कहीं वो दिक्कतें बहुत ज्यादा आ रही है। वो एटलस बहुत ज्यादा अनॉय कर रहे हैं, बार बार जाके जोन आउट कर दे रहे हैं उनको। वो आर्टिक कोल्ड उनका जो पैसिव है लगातार हिट हो रहा है। देखिए चेन टुगेदर फिर दोबारा से आएंगे अंदर की तरफ और ये बढ़िया सेट बनता हुआ जा रहा है। लगातार टाइम रेंज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन पीछे से यहाँ पे देखिए डैमेज फिर दोबारा से आता हुआ दिखेगा और टावर के अंदर घुस घुस के मार रहे हैं। इस बार मॉन्स्टर किल लेके हुए जाएंगे यहाँ पे पकीतो और ट्रिपल किल सीधा विक्टर के हाथ में। इस बार वो फ्रेया के थ्रू आता हुआ बढ़िया तरीके से इस मैच को अपने नाम करती हुई जा रही है। पूरी तरीके से बोलेंगे कि डोमिनेट करते हुए जा रहे हैं इस बार टीम ARX। वो थोड़ी मुसीबत में भी पड़ती हुई, फिर ड्राफ्ट उनकी साइड से ना लाइक बोल सकते हैं कि बेटर हो सकता था। अगर आप यूटिलिटी के साथ ही जाना चाहते थे तो मे भी शायद आपको थोड़ा सा मेज ऐसा हैवी लेना चाहिए था या डिसंगेज ऐसा मेज लेना चाहिए था। अगर वलेर वगैरह रहते यहाँ पे तो ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि बालमन को आगे घुस के खेलने की जरूरत है। उनको अगर कोई पुश डाउन नहीं करेगा, उनको मेल्ट डाउन नहीं करेगा ना, तो वो इजीली यहाँ पे सस्टेन करते हुए आपको बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकते हैं। और ये देखिए गोल्ड लीड जिस तरीके से यहाँ पे जाता हुआ दिख रहा है, काफी ज्यादा गोल्ड लीड यहाँ पे अभी बना लिया है। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे 6K का गोल्ड लीड उन्होंने अपने अंतरित कर लिया है।
जिसके कारण अब यहाँ से कमबैक अगर आपको करना है तो बहुत पीछे रह के खेलना पड़ेगा। लेकिन आई डोंट थिंक कि एटलस यहाँ पे वो मौका देंगे। एटलस हर बारी आप नोटिस करेंगे अंदर जा रहे हैं, डैमेज ले रहे हैं और वो एक सही सेट लगा रहे हैं। और बैकअप की भी बात करें, उनकी टीम से ना बराबर बैकअप मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया बैकअप मिल रहा है आप बोलेंगे तो। टीम मोरिन रॉयल्स यहाँ पर डोमिनेट करती हुई, वो 8 किल स्टार्टिंग में जो दिया था उसके बाद से मुड़ के नहीं देखा उन्होंने। 15-1 का ये स्कोर डोमिनेट करती हुई यहाँ पर मोरिन रॉयल्स। क्या यहाँ पर कमबैक का आशा हम रख सकते हैं टीम एआरएक्स की तरफ से? क्योंकि मुझे दिख तो नहीं रहा है। थोड़ा सा ऑफ मेटा पिक्स के साथ गए थे, पॉकेट पिक्स के साथ गए थे, लेकिन वो पॉकेट पिक्स अभी जो है कामयाबी नहीं दिलाती हुई टीम एआरएक्स को। बट यहाँ से मंशा क्लियर करना पड़ेगा, मंसूबा बनाना पड़ेगा टू गेट ऑन द मार्क, बिकॉज आप ऐसे हार नहीं मान सकते। आपको देना पड़ेगा वो प्रॉपर चांसेस, प्रॉपर ओपनिंग अपने टीम को। 9 मिनट 30 सेकंड का गेम, 15-1 का ये स्कोर। देयर इज अ गोल लीड ऑफ 9K गाइस। मतलब वैसे तो 14 का डेफिसिट चल रहा है किल पे, अगर इकोनॉमिकल की डेफिसिट बात करें तो उस पे भी 9 का चल रहा है। टर्रेट वाइज भी कहीं ना कहीं यहाँ पर टीम मोरियन रॉयल्स ही आगे है। लॉर्ड लेते हुए क्या यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन एक कंटेस्ट देखने को मिलेगा डक की तरफ से। अभी तक जितने भी रिट्रीट कंटेस्ट हुए हैं डक उसमें जीते हैं, बट उसके बाद से हम देख रहे हैं उनको पिट के पास ही आने का मौका नहीं दिया जा रहा है। ट्रांसफर से यहाँ पर कोशिश करने की कोशिश, एंगेज होता हुआ, लेकिन तुरंत यहाँ पर स्लैम करेंगे। Ruby goes down, going for a double trade. K finds a kill there, but suddenly disappointed there. Kenneth को मिलेगा डबल। ऊपर डाउन होते हुए यहाँ पर ट्रिपल क्या ले पाएंगे Kenneth? उनके ऊपर वो टर्रेट का डैमेज, शट डाउन होंगे वो चेस करते हुए यहाँ पर डबल किल डकी। थोड़ा सा ग्रिडी हो गए थे यहाँ पर मोरियन रॉयल्स। पांडा के चक्कर में जो है 2-2 ट्रेड करवा दिए और बाउंटीज भी चली गई अभी टीम एआरएक्स के हाथों। जी बिल्कुल, पांडा जो है वहां पे शुडूश करते हुए दिखे और उसी के साथ 2 किल उनके जो है उनके हाथ में मिल गए। अंदर की तरफ गए, वो टरेट का भरपूर रूप से फायदा उठाया उन्होंने, डिले करवाया, ज्यादा देर तक स्टे करवाया और टरेट के रेंज के अंदर, जिसके कारण वो ट्रू डैमेज उनको बार बार पड़ा। और ये थोड़ा सा दिक्कत रहता है हर टीम के साथ अगर बात करें ना, तो लाइक साइकोलॉजिकल रहता है थोड़ा सा कि आप टीम फाइट जीतते हो तो आप वो बोल सकते हैं कि वो किल्स जब आपको मिलता है ना, तो लाइक उसके लिए आप कोशिश करते हैं कि और ज्यादा किल आपको मिलते रहे। और जब इस तरीके से आप डोमिनेट करते हुए जाते हो मैच में तो गलती होना जायज रहता है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो वो गलती अभी कवर हो जाएगी क्योंकि आपके पास फार्म लीड अभी भी बरकरार है। लेकिन वो शटडाउन गोल्ड आप बार बार नहीं दे सकते। एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, अगर दोबारा से आप शटडाउन हो जाते हैं तो फिर आपके लिए मुसीबतें बढ़ जाएगी। क्योंकि आपने जो एक अच्छी खासी लीड बना रखी थी, आपने एक बोल सकते हैं कि सीढ़ी जो आपने बना रखी थी उसका एक्सेस आपने ले लिया था। लेकिन अब धीरे धीरे करके अगर आप मरोगे तो वो एक्सेस आप सामने वाली टीम को देते रहोगे और वो गलत जो है आप यहाँ पे जो है साबित हो सकती है आपके लिए, आपकी टीम के लिए बुरा साबित हो सकता है। और यहाँ पे देखिए वैलेंटीना, वो हैवी स्पिन उन्होंने चुरा लिया है ताकि अकाई को वापस भेज सकें और 3-3 बेबलेट हो जाएंगे अभी इस टीम फाइट के बीच में। डेफिनेटली 10-18-4 का ये स्कोर आपको देख सकते हैं कितना चहक रहा है अभी टीम मोरिन रॉयल्स। बट एक छोटा सा स्कर्म इसे यहाँ पर देखने को मिला है। फिर फिनिक्स आता हुआ बॉडी का बीच में यहाँ पर कुबरा भागने की कोशिश कर रहे हैं, बट लुक एट द विक्टर, ही गोस इन देयर, स्लैम्ड ऑन टू द कुबरा एंड दैट विल बी स्लेन ऑन टू के एज वेल। 2 ट्रेड यहाँ पर छीनती हुई टीम मोरिन रॉयल्स का ट्रिपल बनाएगी, उसको नहीं पीछे हटेंगे। रिटेलिएशन आता हुआ यहाँ पर टीम एयर तरफ से, वो डिसमेंटल करते हुए इस फाइट से। 43 सेकंड अभी भी बाकी है लॉर्ड को लैंड ऑफ डाउन में आने का। गेम इतना जल्दी कंप्लीट तो नहीं होगा। कोशिश पूरी तरीके से एयरएक्स कर रही है गिव अप ना करने की एंड ट्राई कर रही है कि किस तरीके से यहाँ से वो चढ़ा जाए। बट यहाँ पे देख सकते हैं टियर 2 के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर, अकाई आते हुए यहाँ पर जग क्लियर करेंगे लेन को, पीछे हटेंगे, एक जोन उनको मिलता हुआ, लेकिन तुरंत यहाँ पे एक पिक ऑफ होता कहीं ना कहीं टीम एयरएक्स के हाथों तो ज्यादा अच्छा रहता विदाउट, अगर आप कंपेयर करोगे खूफरा पिक के साथ। बिल्कुल ये सही बात बोली आपने। और यहाँ पे अब देखना पड़ेगा, थोड़ा लॉर्ड के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे आपको ना किसी एक बंदे को पकड़ना पड़ेगा। तो आप पकीतो को फिनिश ऑफ कर दीजिए पहले ही पकड़ के, तो आपको एक बर्स्ट जो आता है ना वो थोड़ा सा बोल सकते हैं कि राहत आपको मिलेगी। लेकिन वो भी संभल के आपको करना पड़ेगा। आप तो या तो अकेले पकड़ना पड़ेगा उनको, या तो ऑफ गार्ड आपको थोड़ा सा जो है एम्बुश करते हुए वहां पे अगर पकड़े शॉटगन के साथ है मैम तो कुछ हो सकता है। वरना पकीतो के पास इतना सस्टेन जरूर है कि वो इजिली सस्टेन करके निकल जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे डैमेज आता हुआ दिखेगा, फिनिक्स ऑफ द फ्यूरी का इस्तेमाल किया गया, जो एम्बुश लगा के बैठी थी टीम मोयन रॉयल्स उनकी तरफ से ना, अब वो एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन आराम से ये लॉर्ड को लेते हुए जाएंगे कैनिथ। और उसी के साथ अब यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। देखिए डिफेंड करने की बात की जाए तो हो जाएगा, अभी 13 मिनट का लॉर्ड है, इतना इनहेंस लॉर्ड भी नहीं है।
तो इजीली डिफेंड कर सकते हैं, अनलेस कि वो कोई जल्दबाजी ना करे, वो ग्रीडी ना हो ज़्यादा, तो बोल सकते हैं कि डिफेंड हो जाएगा। लेकिन आपके इन्वर्टेड टर्रेट टूटने का खतरा वो लगातार जो है वो मंडराता रहेगा आपके ऊपर। वही चीज है, बट अभी फिलहाल के लिए तो टीम एआरएक्स मेरे हिसाब से डिफेंड करनी चाहिए इस स्लॉट को, क्योंकि उनके पास वो मौका है लेट गेम। मैंने पहले से बोला था कि थोड़ा सा लेट गेम कॉम्प है उनका, सेट ऑफ कॉम्प यहाँ पर मॉरियन रॉयल्स का, तो लेट गेम कॉम्प के लिए आपको लेट गेम लेना भी पड़ता है। पहले एक आप देख सकते हैं कि पहले एक पिक यहाँ पर बन सकता था, लेकिन एटलास अंदर जाते हुए फेडलिंस का इस्तेमाल करेंगे, प्यूरीफायर से बचते हुए बीट्रिक्स बजूका फायर का इस्तेमाल करेंगे और लॉर्ड डिफेंड होता हुआ, इनहिबिटर टूटा नहीं, लॉर्ड डिफेंड हो गया है। सक्सेसफुल डिफेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें टीम एआरएस की तरफ से, लेकिन टॉप लेन पे इन्वेड करते हुए एंड गोना गेट दैट इन्फिल्ट्रेशन ऑन टू द टियर एज वेल। बॉट लेन पर भी कहीं ना कहीं प्रेशर डालेंगे, अभी सिंक हो रहा है लेन, तो मिनियंस की जो टोली आ रही है कहीं ना कहीं और एक टरेट का इजाफा दे सकती है टीम एआरएक्स को। बट एट दिस मोमेंट लुक एट इट, द चेज कमिंग इन, वैलेंटीना ने लिया है वो हेवी स्पिन। एक अच्छा प्रोसीजर मैंने देखा टीम एआरएक्स की तरफ से, डिफेंड किया, फाइट लेने की दरकार नहीं थी तो फाइट नहीं लिया, पीछे हट गए, पूरा डिफेंसिव वे में खड़े रहे अभी। जी बिल्कुल। और यहाँ पे अब आपकी स्थिति ऐसी बन गई है कि आपको सेट दोनों ही टीम से लगेंगे। देखिए हाँ, बात करें एटलेस्ट उनकी तरफ से भी आता हुआ दिख सकता है, तो आपको थोड़े से जो यूटिलिटी है वो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि वेस्ट करवाने पड़ेंगे, तभी आपकी जो टीम है वो फ्री ऑन होके फाइट ले सकती है। लेकिन टॉप का जो वो टरेट यहाँ पे गया है ना, बेटे टरेट, वहां से पुश लगातार आपका आता रहेगा, तो एक बंदे को हमेशा बेस की तरफ रहना पड़ेगा वो मिनियंस को क्लियर करने के लिए, क्योंकि उसकी तरफ से वो प्रेशर वहां से आता हुआ देख सकता है। ब्लू बफ की तरफ जाएंगे, यहाँ पे बॉल बन फिनिश ऑफ करेंगे और बढ़िया तरीके से जो है ब्लू बफ ले लिया गया है। फिर दोबारा से वेट किया जा रहा है लॉर्ड का, और उससे पहले टीम जो है बहुत स्लो गेम यहाँ पे खेलती हुई दिख रही है। वो लेन फ्रीज किया हुआ है उन्होंने ऑलरेडी, और जिसके कारण अब टीम को यहाँ पे थोड़ा सा इस लॉर्ड के लिए ना थोड़ा सा आना पड़ेगा, क्योंकि ना आए तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन टॉप लेन की तरफ वो लगातार मिनियंस जो है ना वो क्लियर करने की सिरदर्दी अब उनके सर पे बड़ी हुई है लगातार। डेफिनेटली देखते हैं किस तरीके से इस गेम को आगे लेगी टीम मॉरियन रॉयल्स, लेकिन टीम एआरएक्स के लिए भी बहुत ज्यादा जो है आप बोल सकते हैं यहाँ पर टेंशन उनके ऊपर, वो हारने का टेंशन सवार रहा है, क्योंकि लीड, ओ माय गॉड, यहाँ पे टॉर्मेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे स्क्रम्स के साथ। विक्टर Valkyrie टी-सेट के साथ अंदर जाते हुए, लेकिन उनके ऊपर टर्रेट डैमेज किए, gonna get the kill there, gonna use the ultimate as well, but at the same time you look at the Atlas रिटेलिएट किए, एक छोटी गलती, लाइक ओपनिंग था आपके पास, लेकिन आप तुरंत फाइट के लिए चले गए। गैम्बल करने की कोशिश थी कि लाइक एटलीस्ट अगर हम 2 से 3 ट्रेड निकाल देते तो शायद हम कंप्लीट कर देंगे मैच को, लेकिन आपका खुद का एक ट्रेड निकल गया वहां पे। तो राइट नाउ थोड़ा सा डिफेंसिव खेलना पड़ेगा। बालमन यहाँ पर आते हुए फिर से कहीं ना कहीं थोड़ा सा टॉर्मेंट करने की कोशिश, बट राइट नाउ किलिंग स्प्री सिक्योर करेंगे डक, यहाँ पे वैलेंटीना डाउन होते हुए। और ये देख सकते हैं मैच आगे बढ़ रहा है एंड लॉर्ड की तैयारी कर रही है दोनों टीमें। कोशिश रह सकती है टीम एआरएक्स की तरफ से कि इस लॉर्ड को जो है एक तरीके से आप कंटेस्ट कर सको, लेकिन एट द सेम टाइम रिट्रीब्यूशन भी प्रॉपर रहनी चाहिए। अगर आप गैम्बल करने आ रहे हो और कहीं ना कहीं वो गैम्बल अगर बैकफायर हो जाता है आपके ऊपर, देन यू माइट गेट पकीतो 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 बैकडोर के लिए जाते हुए वो रिकॉल करना पड़ेगा। बीट्रिक्स वो रिकॉल क्यों नहीं किए, आगे क्यों बढ़े, बजूका फायर से क्लियर आउट करने की कोशिश मिनियंस को वो लॉकडाउन करते हुए बेस को यहाँ पे मॉरियन रॉयल्स क्या बैकडोर पे सक्सेसफुल हो पाएंगे, नहीं, मिनियंस वो खत्म हो गए। लेकिन यहाँ पे लॉर्ड पिट पे एक छोटी सी फाइट, ट्रेड मिली है रूबी की 1-for-1, एक्सपी लेना फॉर द एक्सपी लेना, बट ऑन टू द लॉर्ड, इजी लॉर्ड यहाँ पर सिक्योर करते हुए दिखे जाएंगे मॉरियन रॉयल्स। लेकिन अकाई कहीं ना कहीं यहाँ पर कंटेस्ट करने के लिए आते हुए हैवी स्पिन का इस्तेमाल करेंगे, पीछे हटेंगे, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने की कोशिश। लॉर्ड ने नॉक ऑन किया है, कुफरा यहाँ पर फॉलो अप देते हुए, के यहाँ पर आ चुके हैं। एक मौका है यहाँ पर, दस्तूर है एआरएक्स के पास कि वो रिट्रीब्यूशन से स्लॉट को चुराया जाए, लेकिन इसी कारण जो है डर वो अभी भी मौजूद मॉरियन रॉयल्स के हाथों, क्योंकि उनको पता है कि वो दो टर्टल हारे हैं रिट्री फाइट्स में, तो वो ये फाइट इतना ज्यादा ले नहीं सकते आगे। सैनफोर्ड वो डाउन दिक्कत है, हो सकती है। एक छोटी सी फाइट फ्लिकर आता हुआ, फ्लिकर फोर्स आउट यहाँ पे करवा दिया आपका, और उसी के साथ एक अच्छी खासी लीड यहाँ पे अभी मिल गई है।
वो एक जो कोशिश थी पकीतो की अच्छी ज़रूर थी फिनिश ऑफ करने की, लेकिन उसी के साथ ना था थोड़ा-सा आपका जो है यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्रियाक्रम थोड़ा-सा चेंज हो गया है, जिसके कारण ना अब आपको थोड़ा-सा लॉर्ड के लिए और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। एक जो एडवांटेज था वो आपके हाथ से अब थोड़ा-सा जाता हुआ दिख रहा है। ज़ोन आउट करने का दोबारा से प्रयास किया जाएगा, अकाई अंदर की तरफ जाएँगे डैमेज देते हुए। बालमन जो है लगातार उनको देते हुए दिखेंगे और इसी के साथ यहाँ पे ये लॉर्ड लेने की जो चेष्टा है वो सभी खिलाड़ी कर रहे हैं यहाँ पे। अब सबसे ज़्यादा देखना पड़ेगा किस तरीके से इस लॉर्ड को चुराया जाए। बस अकाई को ना वहाँ जाने का मौका मिल जाए और ये देखिए थोड़ा-सा चुपके से पीछे की तरफ से गए हैं। मार करना चाहते हैं, बालमन के ऊपर होगा, बाउंसिंग बॉल का इस्तेमाल किया जाएगा, फिनिक्स ऑफ द फ्यूरी अल्टीमेट लगेगा, पीछे मार्क करना चाहते हैं एमएम के ऊपर और यहाँ पे देखिए विंड ऑफ नेचर का इस्तेमाल किया है, अंदर टावर के अंदर लेके जाएँगे, सीधा फिनिश ऑफ किया जाएगा यहाँ पे फ्रेया को और उसी के साथ यहाँ पे गलती हो गई थोड़ी अंडर गए और ये किलिंग स्प्री उठाते हुए एक के बाद एक यहाँ पे मोयन रॉयल्स उनकी जो टीम के मेंबर्स हैं वो धाराशायी होते हुए जाएंगे, मेल्ट डाउन हो चुके हैं और यहाँ पे गलती साबित हुई, वो एक गलती के कारण आपका पूरा जो गेम है वो चेंज हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे ये लॉर्ड लेने की जल्दी से जल्दी चेष्टा करती हुई, लेकिन मिनियंस वो बेस की तरफ ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, तो आपको फटाफट जल्दी से जाना पड़ेगा और एक बंदे को बैक जाके वो मिनियंस क्लिक करना पड़ेगा। मेज यहाँ पे जा चुके हैं, वो क्लियर आउट कर रहे हैं यहाँ पे और इसी के साथ सांसें जो है अभी भी थमी हुई है। पकी तो कुछ करना चाहते हैं लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, रेट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा और उसी के साथ रेट्रीब्यूशन लगेगा भी। बाल माइंड वो लेके जाएंगे लॉर्ड अपनी टीम के लिए और इतनी सारी घोर तपस्या आपने करी लेकिन क्या फायदा उसका, लॉर्ड तो चला गया सामने टीम की तरफ और आपकी अब इन्वेटेड टर्रेट भी नहीं बचे हैं बचाने के लिए। डेफिनेटली और इसी के साथ आप देख सकते हैं टीम ARX दे आर कुकिंग राइट नाउ, लॉर्ड मार्चिंग इनटू द मिड। एक चांस हो सकता है कि मॉरियन रॉयल्स अभी खत्म कर दे पूरा किस्सा, लेकिन रिसरेक्शन होकर वापस आ चुके हैं जेटीएन पर। वो कोशिश करेंगे किस तरीके से इस लॉर्ड को रोका जाए। सिंक तो इतना प्रॉपरली नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं मिड और टॉप का ही सिंक हुआ है, बॉट का लेन सिंक नहीं हुआ है, तो एक तरीके से वो राहत की सांस है। लेकिन वैल्kyrie डीसेंट के साथ आगे बढ़ते हुए पैसिव मौजूद नहीं है अभी जेटीएन के पास। कोशिश है यहाँ पर डिफेंड करने की, लेकिन वीट्रिक्स को पीछे जाकर पकड़ने की पूरी कोशिश चलती हुई, बैटलिंग यहाँ पर लगा है, रिसरेक्शन होकर वापस आ चुके हैं अकाई। लॉर्ड के साथ अंदर घुसते हुए यहाँ पर स्कर्म्स हमें देखने को मिला, फिर द फीनिक्स आता हुआ, लेकिन वो मिनियंस ये मार्चिंग कर रहे हैं, इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, नॉक ऑन कर रहे हैं डोर को। बस 2 हिट्स आवे, क्या बेस बचा पाएगी? मिनियंस की हिट लग रही है लेकिन समहाउ टीम ARX वो अभी भी हार नहीं मान रही है, वो अभी भी जो है इस गेम को बचाते हुए दिख रहे हैं। कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, फिनिश करना बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पर टीम मॉरियन रॉयल्स के लिए। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इस मैच को डिफेंड करते हुए सक्षम हुए टीम ARX। दे ट्राइड देयर बेस्ट, दे नो कि अगर हम यहाँ पर डिफेंड नहीं करते हैं तो ये मैच हमारे हाथ से जाएगा और हमारे पास सेकंड चांस नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट द BO3 सीरीज, इट्स अ BO1। तो अपनी एडी चोटी का जोर लगाते हुए यहाँ पर टीम ARX कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से डिफेंड किया जाए बेस, किस तरीके से जो है लेन क्लियरेंस को सही से रखा जाए। और इसी कारण जो है वो लेन क्लियरेंस ही मेन चीज है यहाँ पर शिंडा भाई। अगर आप बीट्रिक्स की बात करें, अगर आप Z10 की बात करें, तो लेन क्लियरेंस हो रही है ना, जिसके कारण जो है मिनियंस couldn't even reach it to the base। जी बिल्कुल, और ये देखिए कोशिश करते हुए यहाँ पे वैल्kyrie डीसेंट के थ्रू थोड़ा सा वो डैश लगाते हुए डैमेज देने का प्रयास अभी किया है और यहाँ पे देखिए फिनिश ऑफ द फ्यूरी वो इस्तेमाल होगा। टॉप से फिनिश ऑफ करना चाहते थे लेकिन उनको बैक ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, अंदर की तरफ जाते हुए देखेंगे अकाई वहाँ पे मौजूदा हैं, आएंगे जरूर और उसी के साथ हैवी स्पिन का इस्तेमाल और पिन डाउन किया जाएगा, लेकिन बालमेड होते हुए जाएंगे, फेटिंग लिंक्स का इस्तेमाल, 3 बंदे यहाँ पे दारा जाए उसी के बीच में यहाँ पे फिनिश ऑफ होने का खतरा। पकी तो मौजूदा है, बर्स्ट उनकी तरफ से आता हुआ दिखेगा, मेज का वो डैमेज पीछे से ट्राइन रेंज, एक आखिरी कोशिश उनकी तरफ से और ये देखिए डैमेज आता हुआ दिख रहा है फिर दोबारा से, लेकिन यहाँ पे डबल किल वो लेते हुए जाएंगे बालमेड और अब आई डोंट थिंक कि यहाँ पे वो डिफेंड कर पाएंगे, कोशिश पूरी करने वाले हैं और उसी के साथ अल्टीमेट का इस्तेमाल जरूर किया जाएगा। अंदर की तरफ गए हैं, शट डाउन मिलेगा एमएम को और उसी के साथ ये क्रिस्टल जो है वो फिनिश ऑफ होता हुआ फाइनली इस क्रिस्टल को तोड़ा और उसी के साथ अब ये जो विक्ट्री है अपने नाम करी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें ना, कमाल का खूबसूरत डिफेंड उनकी तरफ से आता हुआ इस गेम को और लेट की तरफ लेके गए और काबिले तारीफ यहाँ पे मैं करना चाहूंगा। लेकिन वो ड्राफ्ट की बात करें यहाँ पे STG और वो भी चल नहीं पाए ज्यादा,
मैंने बोला था आपको रूबी नहीं चलता है इस मेटा में। अगर आप डैमेज ईएक्सपी जाना ही चाहते थे तो आपको बेनेडेटर ट्राई करना चाहिए था। आपको कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो, क्योंकि दो दो डैमेज ईएक्सपी इनके हाथों लग गया, पकीतो एंड फ्रेया। अब आप रूबी से फ्रेया एंड पकीतो को कहाँ रोकोगे? तो थोड़ा सा वो ड्राफ्ट में विचलता मुझे देखने को मिली टीम एयरएक्स की तरफ से। कुफरा लिया गया था, पॉकेट पिक था, वो काम नहीं किया, एंड देन रूबी काम नहीं किया यहाँ पे। तो कोशिश थोड़ी सी और ज्यादा रखनी चाहिए, बट हारी तो नहीं है यहाँ पर टीम एयरएक्स। कोशिश की है, लास्ट मोमेंट तक कोशिश की है डिफेंड करने की, एंड उसने करके दिखाया है। तो आई टेल कि मॉडर्न रॉयल्स डिड मैनेज टू विन द गेम, बट एयरएक्स उन्होंने ट्राई किया। इसी ट्राई के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, क्योंकि अभी आते हैं नेक्स्ट गेम के साथ। लेकिन टीम एयरएक्स को थोड़ा सा ड्राफ्ट के ऊपर अपना नजर देना चाहिए, और वापसी करेंगे वो भी स्ट्रांगली। मी एसटीजी एंड शिंडा छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं फॉर द नेक्स्ट गेम, फिफ्थ गेम एट मोबा वार्मअप क्लास सीरीज। कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून रहिए। ज्वाइन करना मत भूलिएगा अल्गैम्बो ई स्पोर्ट्स के डिस्कॉर्ड सर्वर को, फॉलो करना मत भूलिएगा हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को, और साथ ही साथ लाइक कीजिए इस स्ट्रीम को, कमेंट डाउन कीजिए आप किसको सपोर्ट करने के लिए आज इस स्ट्रीम को देख रहे हैं, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
रात्रि नहीं बल्कि गुड इवनिंग गाइस, शुभ शाम बोलना चाहिए। तो मैं एसटीजी में सदरेंगे शिनरा फॉर द गेम नंबर 5 जो होने वाला है टीम क्यूई जेनिथ बनाम एलिट स्पोर्ट्स। एलिट स्पोर्ट्स उन्होंने वाकई बहुत अच्छा खेला था, लेकिन आपको याद होगा जेनिथ ने कमाल किया था लास्ट टाइम। बट राइट नाउ क्यूई जेनिथ, क्या वो इस BO1 पे कमाल कर पाएंगे या फिर टीम, अच्छा वो क्यूई जेनिथ नहीं था, क्यों नेबुला था, तो आज जेनिथ है। जेनिथ बनाम एलिट स्पोर्ट्स। जेनिथ कौन से पिक के ऊपर अपना गौर रखने वाले हैं और नेब्यूला कौन से पिक के ऊपर अपना गौर रखने वाले, देखने लायक होगा। लेकिन नेब्यूला का मैच इसके बाद होने वाला है, पहले तो अभी जेनिथ का मैच है। उससे पहले मार्शल यहाँ पर बैन होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है एलिट स्पोर्ट्स की तरफ से। मेटा के ऊपर थोड़ा सा जो है ध्यान है एलिट का, क्योंकि जेनिथ एज अ रेड साइड आपको तो पकीतो, जूशिन, अटलास ये सब बैन कर देना चाहिए, और अटलास ही बैन किया है यहाँ पर। और इस तरफ से शायद से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जंगल पे थोड़ा सा फोकस रहेगा, बाक्शिया या फिर फेडरन, इन दोनों में से कुछ, या फिर अकाई भी बैन कर सकते हैं। अदर देन दैट फोबियस भी बैन कर सकते हैं शिनरा भाई। बिल्कुल। अब बात करें यहाँ पे, देखिए काफी अच्छे खासा मंतव्य भी चल रहे हैं। ईएक्सपी पे भी बात की जाए तो वन ऑफ द बेस्ट ईएक्सपी में से एक अभी चल रहे हैं। थोड़ी चीजें भी आती है फोबियस के साथ। अगर फोबियस आप उठा रहे हो तो कुछ आपके कंडीशंस रहती हैं, वो कंडीशन अगर मीट करती है तो तभी आपका फोबियस पिक जो है वो अच्छा पिक साबित हो सकता है। क्योंकि फोबियस का सबसे बड़ा इशू यही है कि उनके पास मोबिलिटी नहीं है। वो बैकलेन को टारगेट करते हुए जा तो जरूर सकते हैं, वो अंदर तो चले जाएंगे, फिर वहां से बाहर निकल पाना वो ऑलमोस्ट मुश्किल है। या तो आपको पूरा ऑल इन जाके फाइट लेनी पड़ेगी, और फिर आपकी टीम का अगर पीछे से बैकअप आए तो बढ़िया है। अगर वो सही समय में बैकअप नहीं आता है तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती हुई दिखती है। और देखिए पकीतो, एटलेस, ये दोनों तो बैन हो चुके हैं। और उसी के साथ साथ तीसरा बैन वो आता हुआ दिखेगा हमको, गॉड यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया बैन मैं कहूंगा यहाँ पे गॉड की तरफ से आता हुआ। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया बयान यहाँ पर। फेडरिन, फिर जूशिन एंड इस तरफ से पकीतो एंड गॉड। फर्स्ट पिक यहाँ पर खुला है, पकीतो बैन है तो फ्रेया ले सकते हैं आप, अगर चाहते हो तो फिर फोबियस हैरत के साथ भी वो कॉम्बिनेशन बना सकते हो। एलिट स्पोर्ट्स के पास वो मौके है जैसे पिक्स ऑप्ट इन करने का। इवन क्लॉड भी खुला है तो कहीं ना कहीं फर्स्ट पिक क्लॉड भी हो सकता है एलिट स्पोर्ट्स की तरफ से। बट अगर क्लॉड को छोड़ते हैं तो फिर देयर इज अ ह्यूज चांस कि क्यूज जेनिथ उसको प्रायोरिटाइज करने के लिए बोलेंगे नहीं। अच्छा पांडा, अकाई ऑन द फर्स्ट पिक, देयर इज अ चांस कि हमें क्लॉड और फोबियस या फिर क्लॉड और फ्रेया ये दोनों दिख सकते हैं फ्रॉम I've been क्यूज waiting जेनिथ। for too long. हम्म क्लॉड, उनका आगमन जरूर आता हुआ दिख सकता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखिए कैरी और सोरा इनका आगमन हो चुका है। कैरी की बात की जाए, उनको एडमिशन की जरूरत रहेगी, थोड़ा सा लीड गेम की तरफ जाते हुए दिखेंगे। अर्ली गेम के लिए आपके पास टेम्पो सेट करने के लिए सोरा जरूर अच्छा खासा मौजूद रहेगा, जिनकी तरफ से अगर अल्टीमेट आती है तो आप बोल सकते हैं कि हाँ एक बढ़िया सेट लगा के दे सकते हैं अपनी टीम को। लेकिन मिड लेन की तरफ वो वहां पे नजरें थोड़ी रहेगी जरूर कि कौन सा पिक आता हुआ भी दिखने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा आपको भी समझ के रहना पड़ेगा। क्योंकि आपने बोल सकते हैं यूटिलिटी जंगलर अगर आपने पिक किया है तो आपके पास ऑलरेडी फ्रंट लेन एक हो चुका है। अब या तो आप My रोम पे kiss सपोर्ट की तरफ जाते हुए grants you दिखेंगे हमको, या तो immortality. फिर आपको ईएक्सपी पे कुछ ऐसा The डैमेज उठाना seven पड़ेगा। seas are लेकिन नहीं, अभी थोड़ा सा wide जो है away. सेटअप की तरफ जाती हुई दिखेंगे एलिस, वो सस्टेन करती हुई दिखेंगी हमको। बर्स्ट के लिए बात की जाए तो कडी तक आगमन होगा, जो एम्बुश करते हुए पकड़ सकती है मेज की तरफ। गॉड बेसिकली अगर गॉड यहाँ पे टीम जेनिथ लेती भी ना तो एक तरीके से कडीता उनका काउंटर है। लेकिन गॉड तो बैन हो गए तो शायद दूसरा मेज आता हुआ दिखेगा। आई थिंक ईव वगैरह के लिए यहाँ पे थोड़ा सा बोल सकते हैं कि वो कोशिश रह सकती है उनकी। लेट्स सी कौन सा मेज यहाँ पे उठाया जाएगा। अगर मेज नहीं आते हैं तो फिर आप किसकी तरफ जाते हुए देखेंगे, चलिए जंगलर की तरफ जाते हुए देखेंगे। बादशाह को यहाँ पे लॉक इन कर दिया गया है, और उसी के साथ जो है बादशाह का जो है उनका आगमन यहाँ पे हो गया है इस समय। डेफिनेटली। एंड इसी के साथ आप देख सकते हैं कि कदीता एंड एलिस, जिसकी आपने बात की, एलिस अभी इतना ज्यादा अच्छा नहीं है कि वो थोड़े से स्क्विशी हो गए हैं। एंड अगर कदीता की बात करें तो आपको बहुत प्रॉपरली प्रिसाइज करना पड़ेगा इनटू द प्ले। लाइक आपको थोड़ा सा छुप के रहना पड़ेगा, बुश वाइज आपको थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ेगा। एंड एट द सेम टाइम आपको जो है एंगेज प्रॉपरली करना पड़ेगा। अगर आप ये सारी चीजें नहीं मानते हो तो फिर कदीता इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकता है। बाक्शिया एंड सोरा को आप टेक डाउन नहीं कर सकते, इट्स जस्ट द कैरी आप जिसको रफ वेब से निकाल सकते हो। अगर सोरा यहाँ पर फुल ऑन थोड़ा मतलब पहले डैमेज के लिए जाते हैं, फुल ऑन टैंक के लिए जाते हैं तो फिर मुश्किल होगा। फुल ऑन डैमेज के लिए जाते हैं तो फिर आप रफ वेब से कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत दे सकते हो। बट बैलेंस यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ एक पिक आता हुआ वलीर,
ये एक अच्छी पिक मैं बोलूंगा। अगर इसके साथ एक हाई लॉस आ जाए यहाँ पर इनटू द साइड ऑफ टीम क्यूवी जेनिथ, तो उनकी ड्राफ्ट कंप्लीटेड एंड सॉर्टेड दिखेगी। अगर हाई लॉस नहीं तो फिर आप खलीद भी जा सकते हो कहीं ना कहीं। खालिद वहां पे भी एक अच्छी अप्रोच रह सकती है आपकी। और यहाँ पे अगर बात की जाए, देखिए डिसंगेज के लिए आपने वलेर ले लिया, चलिए बढ़िया है। लेकिन वलेर आपने लिया है, मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि बीच की तरफ ना अगर थोड़ा सा बर्स्ट टाइप अगर वो आता, लूनक्स वगैरह अगर आता, तो आपके पास थोड़े से और अच्छी स्थिति बन सकती है। वलेर आपने लिया है, चलिए चलेगा जरूर, आप स्टैक मार पाएंगे अच्छा खासा, वो डैमेज आप दे सकते हैं, डिसंगेज आप लेवल 2 के थ्रू दे सकते हैं। लेकिन आपको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कडिता मौके का इंतजार करेगी कब आपका अल्टीमेट यूज होगा, और जैसे ही आपका अल्टीमेट होगा तो बैक लेन पे आप बोल सकते हैं कि आपको फ्लैंक करके आके टारगेट कर सकती है। अगर आप नहीं होंगे तो एमएम के ऊपर प्रहार किया जाएगा। और देखिए उसी के साथ हायाबुसा वो आते हुए दिखेंगे, और हायाबुसा के साथ हनाबी, वो फ्रंट लेन को गलाने के लिए वो रेंज उनके पास रहने वाली है। अब बात करें तो यहाँ पे लेन क्लियरिंग की ना इस समय एसटीजी, तो वो यहाँ पे इलाइटी स्पोर्ट्स के पास भी भरपूर रूप से है। डेफिनेटली। एंड उसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं बेलरिक यहाँ पर एज अ काउंटर पिक किया गया है अगेंस्ट दिस हैनाबी। तो अटैक स्पीड तो आपके पास है, बट एट द सेम टाइम आपको हिंडर करने के लिए एक बेलरिक का भी पिक हो चुका है क्यूवी जेनिथ की तरफ से। तो मैं कहूंगा ड्राफ्ट वाइज मुझे क्यूवी जेनिथ का ड्राफ्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि एज अ हायाबुसा आप इस यहाँ पर किसको डाउन करोगे? मेरे हिसाब से वलीर को यहाँ पे फ्लिकर जाना चाहिए। फ्लिकर के साथ आप हायाबुसा को भी काउंटर करोगे, और कहीं ना कहीं कदीता के रफ हिप्स के जोन को भी आप काउंटर कर सकते हो। एंड अदर देन दैट, अगर हायाबुसा कैरी को टेक डाउन करने की कोशिश की है, तो यप दैट विल बी द ओनली लाइक सेट आप यूज कर सकते हो इस हाया के साथ। वरना बाक्शिया हो गया, बेलरिक हो गया एंड सोरा हो गया, इन तीनों को तो डाउन करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन हायाबुसा इज लास्ट टाइम भी हमने हायाबुसा के ऊपर ही कास्ट किया था, अगर आपको याद होगा मैच। एंड वहाँ पे क्यूई नेब्यूला की तरफ से वो हायाबुसा आया था, बहुत ही अच्छा खेला गया था। बट राइट नाउ हायाबुसा अगर आप खेल रहे हो तो आपको अर्ली गेम स्नोबॉल चाहिए, आपको एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ किल्स एज वेल एज गोल्ड चाहिए टू गेट द स्पाइक। अगर वो नहीं मिलता है तो फिर प्रॉब्लम बहुत होने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैंक करते हुए पीछे हटेंगे अकाई, आई मीन बेलरिक। जी, और ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फोक करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सारी स्किल्स को डॉज करते हुए जा रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। पहले कभी भी थोड़ी सी दिक्कत तो रहेंगी जरूर। अब बैलरी के साथ दिक्कत ये हो जाती है ना कि आप इन नहीं जा सकते। एक तो ऑलरेडी वहां पे विलेयर मौजूद है जो सेकंड स्किल से आपको डिसंगेज कर देंगे, उसके साथ साथ बैलरिक भी वहां मौजूद रहेंगे जो कंटिन्यूसली आपको जो है एक चेन सीसी में फंसा के रख सकते हैं, और इतनी देर में पीछे से बैकअप इतना आ जाएगा ना कि आप फिर हिल नहीं पाओगे वहां से। और हायाबुसा के वीकनेस ही ये रहता है, एक तो बहुत ज्यादा स्क्विशी रहते हैं, पहली बात ये। और हाउड का जो बोल सकते हैं कि जो हार्ड सीसी वगैरह रहता है वो उनका प्योर काउंटर यहाँ पे रहता है। और वो स्थिति यहाँ पे बनती हुई दिख सकती है या चेंज होती हुई हमें दिख सकती है जब एलएस यहाँ पे फार्म हो जाए। एलएस की तरफ से वो सेट अगर लगते हुए दिखे ना कि यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी यूटिलिटीज यानी कि अल्ट वगैरह उनकी यूज करवा दी, तो तब हायाबुसा जा सकते हैं एज अ क्लीन अप करने के लिए। जब फाइट फिनिश ऑफ हो जाती है, बहुत कम एचपी पे रहते हैं, तो वहां जाके हम मार्क कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये सारा चीज डिपेंड करेगा कि फाइट किस तरीके से जाती है, तो एग्जीक्यूशन के ऊपर यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना आपको पड़ेगा। और देखिए थोड़ा सा यहाँ पे पोक आता हुआ जरूर दिखेगा, काय की तरफ से भी मेज को थोड़ा सा टारगेट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन मेज वहां पे उनको डिसंगेज करेंगे सेकंड स्किल का इस्तेमाल करते हुए। टर्टल के ऊपर टीम जो ऑलरेडी आती हुई दिखेगी, बाक्शे की बात करें वो भी ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, हायाबुसा। और ये देखिए सीधा जोन आउट करने का प्रयास किया जाएगा, कॉट शैडो का इस्तेमाल करते हुए अंदर जाएंगे, लेकिन लॉक इन करते हुए उठा लेके गए, बहुत ही बढ़िया चार बंदों के बीच। देखिए एलिस का सेटअप कितना प्यारा, और ये देखिए के बाद एक सेटअप लगते हुए दूसरी साइड से आता हुआ वो फ्लिकर का इस्तेमाल करना पड़ा, बच के निकले सस्टेन। और हायाबुसा की तरफ जाएंगे, कॉट शैडो का इस्तेमाल किया है, फर्स्ट ब्लड मिलेगा जरूर। और बैक लेन में आते हुए खूबसूरत सेटअप, खूबसूरत डैमेज, और उसके साथ साथ पहला किल यहाँ पे इलाइटी स्पोर्ट्स उनके हित में आता हुआ। सेटअप बहुत ही बढ़िया, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि वो रिटेलिएशन भी बहुत ही बढ़िया था क्यूवी जेनिथ की तरफ से। एक ही किल यहाँ पर औपचारिकता हुआ है, और साथ साथ वो टर्टल। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रम हमें देखने को मिल रहा है, बहुत ही कम एचपी में। बेलरिक somehow retaliate back into the safer zone, and right now it will be the Valir as well who will get back into the mark, क्योंकि अकाई के पास तो वो यूटिलिटी है लेकिन डैमेज नहीं है, जिसके कारण वलीर को इतना ज्यादा कुछ जो है प्रॉब्लम नहीं हुआ। रिकॉल बैक करते हुए रोमर एंड मिड लेना, चांस है कि मिड का जो गोल्ड है वो उसको थोड़ा सा शेड किया जाए, बट नो,
बहुत ही प्रॉपर डिसिप्लिनरी वे से यहाँ पर खेलती हुई टीम एलिट स्पोर्ट्स। आप देख सकते हैं कि ट्रेड लिया, बाकी अभी उनके पास मौका नहीं है तो पीछे आ गए। उनको पता है कि अभी थोड़ा सा डिफेंसिव खेलते हैं ड्यूरिंग द सेकंड टर्टल और एक बार फाइट लेने की ट्राई करेंगे, लेकिन वो सेट, उसकी बात करेंगे विसेटा। विसेटा अगर फिर से वैसा कुछ सेट देते हैं एंड अच्छा सा एक फॉलो अप आता है फ्रॉम मिंजे एंड निक्सार, कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि टीम एलईडी स्पोर्ट्स एक प्रॉपर वे से कमाल कर सकती है, एक ट्रेड छीन सकती है फ्रॉम क्यूवी जेनिथ, क्योंकि फिलहाल के लिए भी छोटा सा लीड है, लेकिन लीड है 1.5k का लीड है उनके पास। तो या इट वर्क्स, समहाउ इट वर्क्स। जी बिल्कुल, वर्क तो कर रहा है, लेकिन कितनी देर तक वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब धीरे धीरे बोल सकते हैं कि जो स्थिति ना यहाँ पे चेंज होती हुई जरूर दिख सकती है। लेकर का सही इस्तेमाल, और ये देखिए टावर के अंदर रोका जाएगा एक के बाद एक, और यहाँ से बसती हुई निकलेंगी मेज। काबिल तारीफ उनकी तरफ से, अल्टीमेट का इस्तेमाल किया, पैनिक नहीं किया, बिल्कुल भी वेट किया सही स्थिति का इस्तेमाल करते हुए, और अल्टीमेट खूबसूरती से लगाया, बाहर निकले टावर से। थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है इस समय। रिवाइटलाइज यूज करते हुए दिखेंगे बेलरिक, पीछे की तरफ आए हैं, टर्टल की तरफ मार्क लगाना चाहते हैं, डिसंगेज जाता हुआ दिखेगा, और ये देखिए टर्टल लेने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन एजिस वो यहाँ पे चला जाएगा। एमएम का कोशिश कर रहे हैं, हायाबुसा कॉट शेडो लगाते हुए अंदर आएंगे, फिर दोबारा रेट्री लगाएंगे, जरूर मिलेगा टर्टल, लेकिन एक किल यहाँ पे जोली में जाता हुआ दिखेगा। हायाबुसा वो भी दाराशाही होंगे, टर्टल के बदले 3 किल, चौथा किल के लिए जाना चाहते हैं। अब यहाँ से निकलना पड़ेगा अकाई को, है ना, एक और किल दे जाएंगे। ये ट्रेड ऑफ बराबर कर लिया यहाँ पे, बराबर भी नहीं, मैं कहूंगा कि क्यूवी जेनिथ उनके फेवर में जाता हुआ दिखा। टर्टल सेक्रीफाइस किया, लेकिन उसके बदले 4 किल आपकी टीम को मिले यहाँ पे। डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया यहाँ पर क्यूवी जेनिथ की तरफ से अर्ली गेम बहुत ही बढ़िया गया है उनके लिए। टर्टल वहां पर मिला तो नहीं, बट कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं किल्स मिले, और इसी के साथ अभी किस तरीके के कंसंट्रेशन उनकी तरफ से देखने को मिलता है वो देखने लायक होगा। एलिट स्पोर्ट्स जिसकी मैं बात कर रहा था कि थोड़ा सा डिफेंसिव वे से खेल रहे, डिसिप्लिनरी वे से खेल रहे, लेकिन एक वो चांस उन्होंने दिया क्यूवी जेनिथ को, एंड उस चांस पे बिल्कुल भी जो है रिटेलिएशन हमें देखने को नहीं मिला। तुरंत उस चांस को प्रायोरिटाइज किया टीम क्यूवी जेनिथ ने, एंड तुरंत वहां पर ट्रेड निकाला अपनी टीम के लिए। और ये देख सकते हैं आप गोल्ड डिफरेंस, ये बता रहा है कि ईएक्सपी एंड गोल्ड फार्म कितना ज्यादा था फ्रॉम द साइड ऑफ टीम अपना एलईडी स्पोर्ट्स, पर तुरंत वो चेंज हो गया। अभी धीरे धीरे वो आता हुआ यहाँ पर टीम क्यूवी जेनिथ के हाथों में, और इसी के साथ मैच आगे बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं कि बेलरिक एक जोन आउट करने की कोशिश करते हुए वहां पर अकाई प्रॉब्लम मचाने की कोशिश, इन्वेड ऑन द ब्लू रेड बफ, एंड फ्रॉम द बिहाइंड वी कैन सी द फॉलो अप कमिंग आउट फ्रॉम द वैलर, बट उसी के साथ ही रेड बफ यहाँ पर मैक्स लेने में सक्षम रहेंगे, उनका इन्वेजन नहीं हो पाया। अच्छा फॉलो अप मैं बोलूंगा, अच्छा फॉलो अप एंड अच्छा जोन फ्रॉम बेलरिक एंड को। जी, और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर मस्ता हुआ फॉर द साइड ऑफ टीम एलईडी स्पोर्ट्स बिफोर द टर्टल, क्योंकि उनके पास अभी भी वो किल्स नहीं है, किल्स वाइज वो बहुत ज्यादा डेफिसिट में है। वलीर यहाँ पर अल्टीमेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नॉर्मल पुश, यहाँ पे पिन करते हुए वॉल पर एक स्क्रम इस समय देखने को मिला है। राफो इसके लिए जाते हुए शिफ्टिंग क्लाउड का इस्तेमाल यहाँ पर सोरा की तरफ से रिविटलाइज पॉप अप हुआ है, बेलरिक गोना गेट द किल आउट द कतीता, बहुत ही बढ़िया टॉन्ट आता हुआ, और इसी के साथ लेन होते हुए यहाँ पर अकाई 2 किल यहाँ पर मिल जाएगा। टर्टल इज ऑन फॉर द साइड ऑफ टीम क्यूवी जेनिथ, द फाइट इज स्टिल एक्सटेंडिंग एट दिस मोमेंट। ब्लड आउट का इस्तेमाल किया, फ्लिकर के साथ पीछे हटते हुए यहाँ पर एलिस विल गेट टॉर्मेंटेड, फिनिश किया है यहाँ पर एलिस की कहानी। Somehow ट्रेड के ऊपर ट्रेड यहाँ पर लेती हुई टीम क्यूवी जेनिथ gonna get the turtle, get the turret on the board as well as in the mid। एक बड़ा लेन एक्सपेंशन एंड एक बड़ा ट्रेड यहाँ पर छीनते हुए इस दूसरे माफ कीजिएगा तीसरे टर्टल फाइट पे अचानक से वो गोल्ड स्पाइक जो टीम एलईडी स्पोर्ट्स अपने हाथों में रख रही थी वो अचानक से शिफ्ट हो गया क्यूवी जेनिथ के हाथों में। शिंड्रा कमाल का डिसिप्लिन, कमाल का ट्रेड, कमाल का डोमिनेशन दिखाती हुई यहाँ पर टीम क्यूवी जेनिथ क्या आगे लेके जाएगी इस इक्विलिब्रियम को, या फिर शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा फ्रॉम एलईडी स्पोर्ट्स। वहां पे बात करें ना, सोरा ने जिस तरीके से अपना शिफ्टिंग क्लाउड लगाया, फिर बेलरिक की बात करें, उनकी तरफ से जो अल्टीमेट आया वो काबिले तारीफ, वो लगातार चेन सीसी के अंदर फंस गए, फिर उसके बाद बच के निकलना, वहां से जाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। बहुत अच्छा मैं कहूंगा कि यहाँ पे जो है सेटअप वो लगते हुए दिखा, वो सिनर्जी टीम्स के बीच में काफी बेहतरीन तरीके से नजर आती हुई, और
बात कर रहे थे हम लोग कि कमबैक क्या यहाँ से हो पाएगा या नहीं हो सकता है। आई थिंक चांसेस अभी भी रहेंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से जो टीम्स है वो हमें खेलती हुई दिखेगी। अब गोल्ड की बात करें, गोल्ड लीड यहाँ पे जरूर मिली है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है। देखिए 4K की गोल्ड लीड है, मैं बोलूंगा कि 4K भी नहीं, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि 3K की लीड है, 3.5 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपके पास चांस रह सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे दाराशाही होंगे तो फिर चांस जो बन भी रहा था ना वो भी आपका जाता हुआ जाएगा। ये नहीं करना था, थोड़ा वेट करना चाहिए, आपको बच के निकल जाना चाहिए था, फाइट एंगेज ही नहीं करनी चाहिए थी आपको इस समय, क्योंकि इस समय आप जितनी ज्यादा फाइट एंगेज करेंगे ना आप उतने ज्यादा खतरे पे रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप सामने वाले को लीड लगातार देते हुए जाएंगे, बाउंटी आपकी लगातार उनको जो है मिलती रहेगी, और किल करने का जो एक्स्ट्रा गोल्ड है वो आप जो है सामने वाले को देते हुए जा रहे हो ऑलरेडी। और ये देखिए प्रयास करते हुए दिखेंगे, अकेले फंसेंगे, अकाई अल्टीमेट का इस्तेमाल, लेकिन मेल डाउन मिलेगा कैरी की तरफ से, फ्लिकर फोर्स करवा दिया गया है, और ये थोड़ा सा ओवर एक्सटेंड आप बोल सकते हैं। फ्लिकर बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पे यूज करवाया। बॉटम लेन की बात, बॉटम लेन कह रहा हूँ, टॉप लेन की बात करें तो वहां पे दिक्कत आ सकती है, मेज को अल्टीमेट फोर्स इस्तेमाल करना पड़ेगा, बचते हुए निकलेंगे। पेट्रीफाई का शानदार कॉम्बो, सेकेंड स्किल का इस्तेमाल किया, बचे जरूर हैं, लेकिन पीछे से आता हुआ लगातार कंटिन्यूस डैमेज, और उसी के साथ फिनिश ऑफ करेंगे ऋतिक भाई, और उनकी तरफ से जो है बढ़िया डैमेज, बढ़िया डिसंगेज बोल सकते हैं, वो बढ़िया तरीके से आ रहा है। और देखिए लॉर्ड की तरफ हैनाबी जाती के हुई पास दिखी टीम। जी बिल्कुल जी एसटी जी। नहीं, मैं ये बोल रहा था हैनाबी के पास इतना स्पाइक नहीं है अभी। ना भाई, जो हैनाबी पिक जिस कारण लिया गया था वो कारण से नहीं चला है, और अगर आप इंडिविजुअली कंपेयर करोगे सुगुरु के साथ तो सुगुरु के पास वो स्पाइक आ चुका है एंड वो मेल्ट कर रहे हैं। हाँ, वो फ्लिकर थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया था जिसके कारण उनका रेंज नहीं लगा काई के ऊपर, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मेल्ट किया था वहां पर काई को, इवन हेवी स्पिन चल रहा था और वो वहां पे मेल्ट कर रहे थे उन्हें, मतलब इम्यून के टाइम मेल्ट कर रहे थे, एंड एट द सेम टाइम लाइक उन्होंने कोशिश किया फिनिश ऑफ करने का, लेकिन फिनिश ऑफ हुआ नहीं, वो अलग चीज। बट डेफिनेटली अगर गेम ऐसे ही आगे चलता रहा तो क्यूवी जेनिथ का पल्ला ऑब्वियसली यहाँ पर भारी रहेगा अगेंस्ट एलईडी स्पोर्ट्स। आप सिर्फ एक किल के साथ हो, आपको दूसरा ट्रेड अभी तक मिला नहीं है। यू हैव स्नोबॉल बेस्ट हीरो जो हायाबुसा है, एंड वो उसको अगर स्नोबॉल नहीं मिलेगा तो फिर वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा आपके गेम इनटू द लेट गेम। और आपके पास एक हैना भी है जिसको डाउन करते हुए हमें बहुत अच्छे से दिख रहा है, ये देखिए कैरी गामाना का ओ इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हैना भी, लेकिन लॉकडाउन नहीं कर पाएंगे, फॉलो अप आ नहीं रहा है उनके टीम की तरफ से। एक के बाद एक टर्रेट को डिस्ट्रॉय करती हुई टीम क्यूवी जेनिथ मैप को ओपन कर रही है, ट्रेड ले रही है, स्ट्रक्चर सिक्योर कर रही है, और ये देखिए एक छोटा सा फाइट यहाँ पर छिड़ता हुआ, स्क्रम होने की गुंजाइश। अंदर की तरफ जाएंगे, डैमेज देते हुए अल्टीमेट का इस्तेमाल किया जाएगा, एलिस पूरी तरीके से मिस करेगी, अब स्पिन आएगा जरूर, फ्लिकर का इस्तेमाल करते हुए सोरा वापसी की तरफ आएंगे, और इसी के साथ में जो है वो दाराशाही होते हुए दिखेंगे, और उसके साथ साथ यहाँ पे एमएम भी दाराशाही हो चुके हैं। थोड़ा सा पीछे रह के खेलना चाहिए था, फाइट अभी इंगेज करने की जरूरत नहीं थी आपको, इवन तो आपके पास मौका बन भी रहा था ना तब भी आपको पीछे ही रहना चाहिए था, फार्म करना चाहिए था। और हनाबी को जितना ज्यादा फार्म की अभी जरूरत है तो वो अभी भूल ही जाए कि वो किसी को भी मेल्ट कर पाएंगी, आइटमाइजेशन आपके पास नहीं है अभी, आपके पास वो फार्म ही नहीं है जिसके कारण आपका जो डैमेज है वो अभी आ पाए। और ये देखिए टीनेटिव भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है उनका, और क्रूजिंग साइट की जगह अब उनको जो है यहाँ पे मेलेफिक गन बनाना पड़ रहा है, थर्ड आइटम। चारी की ट्रिनिटी कंप्लीट हो चुकी है, मैलेफिक गन बनाने के लिए वो उतर रहे हैं। वहां पे आप देख सकते हैं कि बाक्शे के पास पहले से अथीना मौजूद है कदीता के लिए, तो वो कदीता वाली पिक भी काम नहीं कर रही, और बेलरिक उन्होंने प्लेड आर्मर लिया है टू गेट दैट डैमेज ऑफ हैनाबी इन कंट्रोल। तो ऑब्वियसली लाइक एक अच्छी बिल्ड सेटअप हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि लगभग लगभग 8,000 गोल लीड अभी हाथों में है, नॉट 8,000, 7,000 गोल लीड यहाँ पर क्यूवी जेनिथ के हाथों में है। तो आइटम वाइज आप डिफ्लेक्टेड ही रहोगे, आप गैप दिखेगा आपको वहां पे, ह्यूज गैप देखने को मिलेगा। और ये देखिए ग्लोइंग वॉन्ड भी पिक कर लिया यहाँ पे, तो अभी एलिस से भी दिक्कत नहीं होने वाला है फलीर को। तो डेफिनेटली मतलब एक के बाद एक जो है +1 आप डालते रहिए, और क्यूवी जेनिथ धीरे धीरे वो जाते हुए उस विजय रथ के, और 11-1 का ये स्कोर, तब से वो एक किल जो मिला था आपको, उसी एक किल के साथ आप खड़े हो। पॉकेट पिक्स जरूर जा रहे हैं टीम, लेकिन वो पॉकेट पिक्स काम नहीं कर रहा है आज। ना पिछले मैच में कुफरा काम किया, बीट्रिक्स काम किया, ना इस मैच पे हैनाबी, हायाबुसा, कदीता जैसी पिक्स काम करिए। कदीता मैंने पहले से ही बोला था कि आपको प्रिसीजन वाइज, पोजीशन वाइज खेलना पड़ेगा, और ये देखते हैं यहाँ पर चौमिन करते हुए मौका तक नहीं दिया उनको रफ वेव्स यूज करने का, और एक इजी लॉर्ड यहाँ पे बनेगा टीम क्यूवी जेनिथ के लिए। होली शील्ड
मौजूद नहीं है। 12 मिनट के ऊपर का गेम चला चुका है। टीम एलईडी स्पोर्ट्स डेफिसिट में चल रही है, चाहे आप गोल्ड की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स की बात करें। तो अभी इस लॉर्ड को डिफेंड करना बहुत मुश्किल होने वाला है आपके लिए। आपके 5 बंदे होंगे, लेकिन उनके पास वो डैमेज नहीं, उनके पास वो सस्टेन नहीं। अगर एक प्रॉपर सेटअप मिलता है तभी कुछ हो सकता है। और ये देखिए किस तरीके से लेन को ब्लॉक करने की कोशिश चल रही है क्यू ज़ेनिथ की, ताकि जब लॉर्ड आएगा तब लेन सिंक्रोनाइजेशन एक अच्छी पैरामीटर के साथ हो और उस पारा के साथ जो है इस गेम को कंप्लीट भी किया जाए। 15 मिनट से पहले चेतावनी फ्रॉम क्यू ज़ेनिथ कि हम कंप्लीट करने वाले, हम फिनिश करने वाले इस गेम को। लॉर्ड मार्चिंग फ्रॉम द बॉट, टॉप से आप देख सकते हैं सोरा मीनियन वेव्स को लेते हुए आगे आएंगे। हैना भी उनके पास मौजूद है, क्लीन क्लियरेंस हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर उनको वहां पर ट्रैप डाउन किया गया तो फिर शिनरा मुश्किल हो जाएगा एलईडी स्पोर्ट्स को कम बैक करने के लिए, मुश्किल हो जाएगा इस लॉर्ड को डिफेंड करने के लिए। इसी के साथ लॉर्ड आगे बढ़ता हुआ अंदर की तरफ आएंगे, लॉर्ड मार्च करेगा बॉटम लेन से। बादशाह वो सीधा नाभी के ऊपर मार्क डाउन करते हुए जा रहे हैं, लगातार डैमेज आता हुआ दिखेगा। एलिस की तरफ से आखिरी प्रयास रोकने का, और ये देखिए थोड़ा सा डिले जरूर करवा दिया है। वो लॉर्ड को थोड़ा सा डायरेक्शन आपने भेज दिए, सही समय पे बच जाएंगे। मिनियंस अभी भी आ रहे हैं, इनहेंस मिनियन, और ये बढ़िया स्थिति, बहुत अच्छी तरीके से आपने डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया, बाहर उनको निकाला, जिसके कारण वो लॉर्ड का फायदा ज्यादा हुआ नहीं। हाँ, हालांकि बोल सकते हैं कि इनबिल्ट टरेट वो आपका जरूर जाता हुआ दिखेगा, और वो हर एक कीमत पे जाता ही जाता। उसको डिफेंड कर पाना नामुमकिन था, लेकिन उसके बदले आपने 2 टावर बचा लिए, अपने एक को सेक्रीफाइस कर दिया है। और मिड का टारगेट जब तक आपका गया नहीं है ना, तब तक मैं कहूंगा आपके पास एडवांटेज थोड़ा सा तो रहेगा दोस्त। एक चीज थी कि वहां पे कैरी को निकाला गया टीम फाइट से, तो वो एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन था कदीता की तरफ से, निक्सार की तरफ से। एंड देन कहने के हायाबुसा को वो ट्रेड मिला बेलरिक का, तो फ्रंट लाइनर एंड बैकलाइन कैरी को दोनों को डाउन किया गया, जिसके कारण डिफेंसिव मोड पे चली गई और डिफेंड एक सक्सेसफुल तरीके से दिखने को मिला हमें टीम एलईडी स्पोर्ट्स की तरफ से। लेकिन क्यू ज़ेनिथ वो कहाँ हार मानने वाली है। छोटा सा ही गोल लीड जो है उनका निकाला गया है उनके हाथों से, अभी भी उनके पास मौजूद है वो 7,000 का गोल लीड, लगभग 7,000 का। तो हार तो नहीं मानने वाले वो 6,500 के गोल लीड के साथ। तो मतलब आप फिर भी कमाल दिखा सकते हो, मतलब 9,000 से वो 6,500 हुआ है, तो डेफिनेटली अभी भी चांसेस है। लेकिन अगर गेम लेट जाता रहा तो फिर हैना के पास वो स्पाइक आएगी, दिक्कत हो सकती है। एलिस को यहाँ पर रोकने की कोशिश, 4 मैन ट्रैप डाउन यहाँ पर आता हुआ, पीछे से आएंगे अकाई यहाँ पर फॉलो अप देते हुए, एंड सो टू द कैरी गोज डाउन देयर, मेगा किल सीकर ऑन टू द एलिस एज वेल। कौन का ये साइड वर्ड स्लेन होते हुए यहाँ पर पेलरिक, एंड वो लुक आफ्टर इट सोरा को भी यहाँ पर ट्रेड डाउन करते हुए। Comeback is possible for LED Sport, but somehow the Kai goes down. Shadow Rapper onto the Baksha. Double for the Haya, and suddenly the Haya goes down as well. ट्रेड के ऊपर ट्रेड छीना है यहाँ पर, लेकिन फाइट जो है वो जीता है यहाँ पर एलईडी स्पोर्ट्स ने। 4 बनाम 3 का ये ट्रेड, डबल किल वहां पे सिक्योर करते हुए वलीर। चांस है टू गेट दिस लॉर्ड, हैना भी उनके पास मौजूद है, लेकिन खतरा रहेगा वो वलीर का, खतरा रहेगा वो रिसरेक्शन का। चिंड्रा यहाँ पर हैना भी अकेले लॉर्ड ले सकते हैं, कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन नहीं सही समय वहां पर कि वहां पे जाना बेकार ही रहेगा, तो लीन क्लियर की तरफ वहां पे बढ़ गए। और देखिए लॉर्ड यहाँ पे थोड़ा सा पोक करते हुए दिख रहे हैं, मैच पीछे हटेंगे इस समय, रीसेट होता हुआ लॉर्ड, और इसी के साथ गेम फिर दोबारा से पीछे आ चुका है। टीम्स जो है अब इस लॉर्ड के लिए लड़ती हुई दिखेंगी, लेकिन उससे पहले लेन्स को जो है वो मैनेज किया जाएगा और पोजीशन ली जाएगी कि अच्छी खासी उनके पास एक अपर हैंड रहे, वो पोजीशन के थ्रू जोन आउट करने का प्रयास करते हुए देख सकते हैं। एलिस की तरफ से एक अच्छी अल्टीमेट वो आगाज रहेगा, इस बार फिर से कैरी को आपको टारगेट करना पड़ेगा। अगर टीम फाइट से पहले आपने कैरी को नहीं निकाला और कैरी को अगर अच्छी पोजीशन मिल गई यहाँ पे, तो वो गेम एंड कर सकती है, तो उधर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बॉटम लेन की तरफ वो क्लियर करते हुए देखेंगे हायाबुसा, समय है उनके पास, उनको पता है लॉर्ड स्टार्ट होता हुआ, और इसी के साथ यहाँ पे स्टार्टिंग होती हुई ये लॉर्ड को लेने के लिए टीम कचमकच करना चाहती है, और कहीं ना कहीं सूरा की तरफ से वो सेट आने की आशा जरूर रहेगी, लेकिन निक्सार वो अपनी टीम की आशा बनते हुए लॉर्ड को स्टील करेंगे। एलिस की तरफ से शानदार अल्टीमेट पीछे से सस्टेन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कैरी का वो डैमेज वो उनके बर्दाश्त के बाहर, और उसी के साथ 3 बंदे धराशायी हो चुके हैं आपके। अब थोड़ा संभल के आपको खेलना पड़ेगा, किसी भी तरीके से ये लेन को आपको डिले करवाना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। डैमेज दिया जाएगा, अंदर की तरफ जाएंगे, निकाला जाएगा यहाँ पे बादशाह को बहुत ही बेहतरीन तरीके से।
लेकिन एमएम अभी भी जिंदा है भाई। कैरी की तरफ से वो जो उनका जो डैमेज आ रहा है ना इस समय वो बहुत ज्यादा है। किसी भी तरीके से आपको कैरी को रोकना पड़ेगा। और देखिए कोशिश करते हुए दिखेंगे, मेज सही समय पे गए जरूर थे, लेकिन एमएम बाल बाल बचते हुए। अब हायाबुसा थोड़ा और वेट कर रहे हैं, लेकिन ये बेलरिक जो है ना वो बहुत दिक्कत दे सकता है। अल्टीमेट का इस्तेमाल किया और ये देखिए लगातार सीसी लगेगा, बीच में फिनिश ऑफ कर दिया गया है। मार करेंगे बेस को और कैरी सीधा इस मैच को अपने नाम बनाते हुए अपनी टीम की तरफ ले जाएंगे। क्योंकि नेबुला बहुत ही बेहतरीन लॉकडाउन कर तरीके दिया से वहां पे बेस को, देखा कि मौका है हमारे पास, जी, कदीता के पास अल्टीमेट नहीं है, रफ वेव्स यहाँ पर कूल डाउन पे है, हायाबुसा का उगी शड़क किल कूल डाउन पे है, मिनियंस को यहाँ पर क्लियर आउट करना मुश्किल रहेगा आया के लिए। तो डेफिनेटली अंदर घुसे, लॉकडाउन किया, क्योंकि उनको पता है कि लॉर्ड तो डिफ्लेक्ट हो चुका है, लॉर्ड बॉट लेन से जाने की कोशिश कर रहा है, तो अभी लॉर्ड के ऊपर ध्यान नहीं देते। रिसरेक्शन टाइम अभी भी 6-5 सेकंड का है, तो हम जो लॉकडाउन अगर किए बेस के ऊपर तो क्राउन हमें मिल सकता है। और प्रॉपर वे ऑफ थिंकिंग, प्रॉपर वे ऑफ डिसीजन मेकिंग इनटू द फिनिशिंग लाइन, और कंप्लीट किया इस गेम को बहुत ही बढ़िया फ्रॉम द साइड ऑफ क्यूई जेनिथ। कोशिश रची थी एक छोटी सी एलईडी स्पोर्ट्स ने, लेकिन कामयाबी वो मिल ना पाई, फिनिशिंग जो है वो मिल ना पाई। तुरंत क्यूई जेनिथ ने पनिश किया, तुरंत क्यूई जेनिथ ने वहां पर लॉर्ड छूटा उनके हाथों से, लेकिन 3 ट्रेड निकाल दिया था, जिसके कारण इन दी एंड डेफिनेटली वो विक्ट्री उनके हाथों लगी। बट इसी के साथ स्टे ट्यून गाइस, बिकॉज़ लास्ट गेम अभी भी बाकी है मेरे दोस्तों, एट मोबा वार्म क्लास सीरीज पावर्ड बाय अल्गैम्बो ई स्पोर्ट्स। तो कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून रहिए और हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि फ्यूचर इवेंट्स में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, चाहे वो गिवाए हो, चाहे वो टूर्नामेंट हो, वो सारी चीजें, सारी इन्फो हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे आती रहती है, तो ज्वाइन कीजिए। और क्या पता आपको अपनी टीम वहां पे मिले, क्योंकि बहुत से मोबा प्रेमी जो है हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर के मेंबर है, तो आपको आपकी टीम भी मिल सकती है, हु नोस। इसी के साथ शिंडा एंड मी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, कमिंग बैक सून फॉर द नेक्स्ट गेम।
podcast. Hello, ladies and gentlemen. Welcome back to Algambo Esports Mobile Warmup Class Series. It's your boy STZ, but right now with a different lingual, that is the English. And with me, Ray will be joining us as well. So, hello, Ray. QE Nebula is going against Team Mavericks. We have seen these two teams dominating in the last week of scrims, but right now they'll be facing each other. What do you think? What will be happening? Team Maverick gonna take on the game, or QE Nebula want to give a beautiful finish as like the Kiwi Zenith? Last week actually Nebula was able to pick up a win, but I can tell Ash is so excited to cast in English than Hindi. Like you can feel his excitement on English. It's like toned up 10 times. But anyways, last week we had a BO3 series, right? Not last week actually, basically last scrims. Right here at Algambo Esports, powered by kridox, we had QE Nebula take a clean sweep against Mavericks. So this is kind of like another rematch, you can say, their third game back to back. And this happened because of the timing preferences. We obviously like to put random matchups, but both teams wanted this last slot. So yeah, they're here facing each other again, like fate called upon them. And because of that, since they're facing each other once more, Mavericks has a good chance of getting a victory in this BO1, right? Because in a BO3, I guess it's kind of hard, but in a BO1, it is unpredictable what you're going to be going for. But since Zushin is open, QE Nebula can definitely prioritize it right now. Definitely, as we can see that Jushin might be the first pick. If not Jushin, then might gonna see a Balir coming in as well, or if not the Balir, then Eve might be the process or pick for the side of QE Nebula. But talking about meta, the Paquito is open right now. They might gonna go for the Paquito, as well as there is a chance for the Freya. But as Ray mentioned, and he's here, so obviously the Jushin will get featured under the hand of QE Nebula. But right now, onto the side, we're gonna see the Zatian coming in. So do the Queenie as well. But Zatian is not just a counter for the Jushin. But right now in this economy, I don't like the Zatian coming in. Even Team Maverick used him the last day, but it doesn't happen to be, good enough for them in the two of the games. But now, QE Nebula, what they're going to prioritize? Is the Paquito will be their choice? Is the Freya coming in? Is the Claude being the pickup here? Yeah, Phoebus and Atlas is open as well. And but I feel like with the Jushin, you should go with a Hylos rather than Atlas. If not the Hylos, then you should try the Khalid as well. Yeah, I guess they would prioritize the Atlas because of a simple reason. He's meta and he's strong, and his slow is like more dangerous than Hylos right now because he can in a way it's a dash, right? He uses a second skill and he can go so fast he can reach you easily compared to a Hylos who has to use his ultimate. And there we go, we get the Atlas with the Phoebus coming in. They just need really strong frontliners right now. And Team Mavericks immediately they respond with the Alice pick. Definitely. What a picks coming in out from both the sides here. You can see that first the Jushin and now the Phoebus and Atlas. Okay, Ray, I got it. How you got the buff? I know it. It's fine. Now I can say that why you're, totally right with the drop. And we can see that Team Mavericks are going for the bans here. Ray, can you please tell us? No, I don't know what you're talking about. I have genuinely no idea. They might ban Harith right here, though. They might ban Harith here. I don't know. Okay, I know. I was like, bro, why suddenly Ray said the Phoebus? I have opened my third eye. Keep it a secret. You open your third eye. The Ray's analyst third eye. This thing's even Debbie doesn't have this, guys. But obviously, Ray they missed the ban. Nobody is going to go for a challenge with you or bait with you in this game. At least I'll do the bait with somewhere else. Wait for it. The ban coming in here. The Harith has been taken out from the side of Team Mavericks, and QE Nebula about to pick a ban as well. Now the picks coming out here. The Alice into the EXP. There is a huge chance we might going to see into the goal a Claude or maybe the Moscow, but the Moscow is banned. So yeah, Khalid. Okay, it will be the Khalid. Definitely, they missed a ban. And then the Khalid. So Ray is totally onto the mark tonight. Yeah, third eye powers, man. Third eye powers, and it only happens at Algambo Esports, and that's why you should, subscribe to our channel and join our Discord to open your third eye as well, ladies and gentlemen. You can get access to it. Trust me, just join us. And jokes aside, of course, the registrations are open for the next day's Fridays scrims as well. There's going to be a YSS popping in, and right now the last pick is going to be coming in from the side of Team Mavericks. So make sure you join our Discord server. We have scrims hosting every Monday, Wednesday, Friday.
and we even have Honor of Kings registrations open. So if you're a team who's actually also playing that game, you can also register for that one as well, and we'll host it for you, bringing you, of course, hype talents, and they will close up the draft with a Beatrix, I believe. You don't believe, you just say it. You just say it, bro. You don't have to say believe word or if or so, this kind of words. You have to say it. And this is the Beatrix, guys. Okay, draft wise, joke aside, Ray. Draft wise, what do you think? Like pocket pick from Mavericks, while we're gonna see the meta picks into the hand of Queen Nebula. Yeah, But how this Nebula, East all engine is meta. going to work? How this East engine is going to fit here? Let me know this. YSS, regardless of how the meta is, he's always been a really fast jungler. So that's something that you cannot take away from him. So he will farm as the moment he reaches a level 4 and he gets his ultimate. That's when he gets like a really good power spike to like rotate the map, because he gets the vision as well. So it's not easy to ambush him either. The second thing is, obviously, like I mentioned, they have a lot of different picks here, but they're also kind of technically meta. Beatrix, I would say, is most likely the one that is not exactly what people would consider the most top prio in the meta, but she's slowly rising back into the scene as we're getting closer to the MSC season. But with this, ladies and gentlemen, welcome into the Land of Dawn. We're going to be getting QE, Quantum Zenith Nebula, Quantum Eclipse Nebula. Zenith was last game. Yeah, versus Team Mavericks. A rematch of sorts from Monday's scrims. And right now, already we can see a lot of poking will start in the mid lane between both of the roamers and mid laners and Ashe. Right now, who do you think might be getting the first blood? I think it's Queen Nebula who will get the first blood here, because look at it, like they got Jushin, so they will have upper hand in the mid lane. Yep, and they do have the Phobius, which will have a little bit of winning effect into that Alice in the early phase of the game. And talking with the goal lane as well, like the Claude, if he plays safe, he might be giving some chances into the turtle. But before that, we're gonna see the Desert Honor coming in. There's a pick off as well. At last goes in for the goal lane gank there. Beatrix in a very bad position, will goes back into the safer zone at a 50% of health, and look at it. That is a fight breaking out. The initiation comes in as well. Khalid goes back, and we're gonna see the land player coming in as well. But it might be a poke. There's a tornado. Beatrice goes in. This BMI. Blood. What was it? BMI was another monitor, right? But yeah, anyways, QE Nebula right now barely scraping it off from the first blood. They almost lost Slangs on the top side, and even Claude, I would say it was pretty close. But Claude did not. Domenkai did not use the Purify, but to be fair, Purify is not going to be helping him at all. Most of his opponents actually do not have crowd control, except for Lapo God's ultimate Throne of Ruin with Guinevere's Violet Requiem. I guess he's having the Purify for Guinevere, right? He doesn't want to get picked off so easily by the Guinevere. So right now with the turtle spawning in towards the bot side, it's going to be interesting who gets it. Both of the junglers have good chance, but Fila, he misses that Mountain Shocker, and right now has to go back towards the turtle side. That's a nice escape, I'll say, but out of the EXP, okay, Blood Out comes in, he goes back into the safer zone. There's a zone out coming from the Khalid as well. They're going for the turtle. There might be a fight coming in. Initiation is happening there at last with the skill 1. He's gonna give some taunts. That's a Desert Tornado. The ruin comes away with the retribution of the Mount. Pila got the turtle there. Now he comes back. Mount Shocker release as well. Now he might gonna go for the fight. That's the first blood coming in. 20 falls down. First blood secured. But now at last goes down as well. That's a beautiful rotation coming out from the top to bot. And that will be a 3-for-1 trade coming out from the side of Team Mavericks. They have not forget what happened last day. They are taking the revenge. The revenge arc is on here. You won with a 2-0. Now it's our chance to get on you in this BO1. That is insane. Insane props to Fila over here. Like, goddamn, he landed a retribution, even though, like, Lapu God was actually so on point with the Throne of Ruin. I honestly thought Alice was going to get it with how precise it was, but he still lands it despite the immobilization. That is impressive. But to be fair, immobilization doesn't stop your, spells, right? So yeah, because of that, he was able to click the retribution. It's not exactly a stun. It's an immobilize. You just cannot move. So with that, turtle, of course, they lose 3 bodies. Mavericks, just like you said, they're up for revenge and they're here for a rematch, and they get the 3 kills. But Ashe, it's still early game, right? It's still 3 minutes, but it's impressive. Just 3 minutes, 3 kills. Mid side, at last, level 4. Does he want to commit to it? There is, of course, YSS nearby. He can, honestly. Yeah, oh my god, can, honestly, but oh my god, that's a fight coming in here. Look at it. Too late follow up. 2-2, obviously. But still, they will not get any trace out of it.
That's a nice escape for the Alice. He goes back into the safer zone, and at the same time, we're gonna see the burst coming out from the GTN as well. Itemization, of course, Radiant Armor most likely coming in for Phobia's full tank build. I love it. Atlas going for the Dominance Eyes. Onto top side, another stun landing in. Beatrix immobilized, flickers away. Gonna be fine with her teammates around. Oracle secured for Lapu God, gets that cooldown reduction and the extra heal that the Alice, of course, enjoys. And right now, towards the top side, Atlas taking a lot of free hits. He should definitely avoid all of that. Should stay in full HP. Right over here, Ethereum on that Khalid has been picked off not a single time despite getting so close every time, but the turtle fight is on. Does it happen once more? Fila, same thing, but no! No, this time the Satan got the turtle with the fear of the Phoenix. The fight continues, and that will be the desert turtle. Fila falls down immediately. Maverick goes in with the special migration validity combo. That will be the kill on that class as well. Oh my goodness, they're tormenting down the phobias. He goes back somehow with the Cyclone Eye used. He will be retaliating back into the safer zone onto the top side. That will be a 1v1 coming in, but look at the follow-up from the Khalid. He does have the power to go in there with the help of the expanding river. So yeah, Claude needs to play defensive. Yeah, massive fight that just broke out right now towards the river area on the turtle fight. Zetian, unexpectedly this time around, her ultimate actually lands on point over the retribution of Fila. And because of that, we saw, of course, their team getting it. And with this Mavericks, time and time again, they somehow do not give a single more kill to QE Nebula, while Mavericks garnered 2 more on the board. Quite a big fight that I honestly thought could have been a wipeout, but most of them were able to retreat, like the Zushin and Dominkite. Obviously, they survive it, but the rest of the members, Slangs and YSS, they were not lucky. They're both sitting at 2 deaths. Top side, though, that is a bad move for G-Razy, gets taken away. G-Razy was trying his best though, but he couldn't manage to survive there. But now the fight continues. Fila comes in with the Mountain Chakra. Fear the Phoenix coming to the back right now. Fly! Oh my god, that will be a kill on Urimaru. And that might be a third one going on to Etheron as well. 3 trades get secured from Kiwi Nebula. They're not giving it away. They are taking it on as well. Fly is playing it safe though. But now Passive comes in. He's gonna use that burst as well, but the turret falls down immediately there. I believe Z-Razy going for the overextension, and then the follow-up coming out from the team was not necessary at that point because you had a goal lead, you had a lead on the kill, and now you lost it. And the turtle about to spawn in. Even though the turtle is 1-1, let's see who will be taking on this third one. Yushu. Yep. And right now, of course, Beatrix prioritized the Blade of Despair, so she just got it right now. And because of that, she will get the power spike, but her penetration and the range that she could have gotten for the Malefic gun is not there yet. Turtle fight gonna be popping in, Mountain Shocker as well. Oh my god! Oh my god, the game goes in. Fila finds the kill out to fly. There's the Windpuller Pursuit coming on the back as well. No fair. Double on Z. And might be a triple coming in. Let's see if Quinny can go in. He finds the decoy there. He's gonna go for the Valkyrie Kim, but suddenly got imparted into the AR. This will be it, guys. Throw the rain, connected as well. Doesn't have the blood at this moment. Fovis goes in for the Infernal Pursuit. Fila got the turtle easily, uncontested. Now the Vengeance popped up as well. Fear the Phoenix coming out from Fly. He got redirected back to the ladder top. Well, let's help. And he's gonna go for the kill here. Slain happened on Yoso there. And now the revenge arc is on. Mega secured. Fila got the kill after the turtle. The recall spam. That celebration from the side of team QE Nebula. Look at it. Mountain Shocker release zone coming out. They're chasing down the Khalid there. But somehow Theron, he gonna goes back at the safer side. Team Maverick, they are on to the point, but losing out the fights here after the third turtle. Before the third turtle, I'll say after the second turtle. Yep, Ash. And right now, like, what was the thing again? I don't know why G-Razy is like constantly on the Bennett. Like, he's just on the bazooka. Like, if he had a shotgun or the machine gun, he could have actually fought back on the top lane and might have actually killed someone. Since he was on the bazooka, he's not able to really provide much, right? So I think he really needs to swap that missiles and go with the shotgun and the machine gun because they have been fighting face to face quite a lot. That, of course, Bennett is good. Okay, that's a Throne of Ruin wasted. He's gonna be taken away. Yeah, that's a kill. As the fight continues, that will be the unstoppable secure by Fila here. He goes in for the Mountain Shocker, but that will be the retaliation dismantle coming out from the side of team Mavericks here. They really want to play safe, and that's what they're doing. They're not pacify the things. They're kind of offing it. But at the same time, Ray, you need to clear out the things here. If not, then you might be in trouble. So yeah. Yeah, of course they have to. Right now, Fila, he has 50 stacks on the Sky Piercer. And
After all, a YSS with Skypiercer, of course, just like any other snowball jungle, it's scary. He does not really need to do much damage. Just needs to come in with a mountain shock or needs to land it wherever Atlas picks off someone, because there's no Purify, of course, in front, and he just gets a triple or so pretty easily. Look at that. Beatrix just does not get any angle, and Ethereum also getting so much pressure coming in. Lord has spawned in, and I believe QB Nebula are going to be able to get this Lord with basically zero tension with how much zoning they have created. At last, still looking for an angle to go for a Fatal Links. He does have the Flicker as well, but seeing how back Team Mavericks is playing, yeah, they are not going to be responding back. Looking at the graph, you can see at first Mavericks did have the lead, but right after that mark, man, it just shifted completely for the side of QE Nebula. That's what happens, bro. Like, the graph is showing the EXP trade as well, so do the gold trade, but at the same time, like, Ray, these things are not so much for the side of Team Maverick. They can come back in this game if they really wants to, but look at it. Because they do have a Beatrix. See Razy onto the Beatrix, not onto... Oh my god. Oh my goodness. Nah. What was that? That's a snipe coming in. Monster kill secure. 2 men down right now. Lord marching from the bot, and you don't have your frontliners. Yep. This is kind of pesty. Now, Meteor 2 about to crash in there. They're gonna open the map for them. The expansion is happening. Gold shield about to pop out as well. Yep. That's a bazooka fire comes in. And with that, there will be still the Lord. But the Lord will get taken away by this Holy Shield. They're going to be fortunate enough. It's going to be dealt with. But they're still going to be dishing out, Throne of Ruin. Lands onto 2. Lands onto 2, but the Infernal Pursuit comes in for the Phoenix connected as well. Look at the bazooka fire coming out from this Beatrix, but it's moving the godlike onto the Alice. Vila is having the damage right now. They're going to go with the Mega Minions. They're trying to scratch out that inhibitor to open up the window for them. Infinite Pursuit goes in there. Minions marching in as well. That will be the destroyer onto the tier. And this will be it, guys. They open up the base, this first Lord. Team Maverick, they do have the early game, but then suddenly we see the shift into the hand of Kiwi Nebula, and this is what the Ishin Shin is playing right now, carrying the whole game in his whole hand. Jushin goes in for the Lantern player, giving out a lot of chance of the Khalid. He do use the Sand Guard, but immediately falls down, as that will be Dominkite with a Cloud, finishing up the Khalid. Yeah, and Crimson Beacon was used a little bit haphazardly. I believe she wanted to go in, but the rest of the team was just not there to follow her up. But regardless of that, right now, QE Nebula has 13 kills compared to 6 of Team Mavericks. And right now, YSS is sitting at 70 stacks because, he got the Skypiercer after dying 2 times in the early game. So he has exactly 70 stacks. If he gets one more kill, that's going to be 80. We're getting the max 20% HP execution, which is, of course, basically confirm kill on every fight right now. Top side, Atlas taking a lot of damage, but he'll be able to retreat. He does have the fleeting time, so he can honestly actually engage a lot more. I feel like Slangs, since you have fleeting time, you should be using your ultimate more frequently, considering there's no Purify in front. Only the Guinevere is kind of CC immune, isn't it? So he could have honestly initiated more. They do have the damage after all, but I guess they are playing safe and disciplined. They don't want to throw the game away. Fila right now gets the Blade of Despair, the strong power spike into the hands of YSS. Definitely, Ray. And Team Mavericks, they're trying their best here, but at the same time, they're falling down. Wait, he's actually riding some form of animal, right? The Khalid? It's a jellyfish, if I'm not wrong. Oh, yeah. No, it's not a jellyfish. It's actually a... Okay, I forget the name of the fish, though. It's a stingray. Stingray, yeah. It's a stingray. Yep. And this is actually the Aqua series skin of Khalid. Yeah. Now that the player comes in there, Alice goes down, they're chasing them up, and will be the connection out of the stun. Khalid do have the skimmer. He goes back there, but suddenly the Lantern player is giving out all those damages onto him. You can't deny a Jushin pick, bro. Really, it's so hard for the frontliners to sustain not to sustain, but to play safely and to play smoothly when a Jushin is around there. Exactly, bruh. I love some Zushin Glaze in the house, but yeah, that's the thing. Giving away the Zushin, and right now in today's meta, I believe Zushin and God are 2 mages that you just give or take. Don't give and take. They're those 2 mages, right? Genuinely. Rest, you can kind of handle. Rest are meta, but yeah, these 2 are basically the pinnacle right now.
And with that 14-6 score, Lord marching in the bot side, we're getting the turrets getting taken away. Mavericks, despite looking for revenge, looks like QE Nebula will try once again. They're looking for another setup. At last. The Phoenix comes in there. Hey, At last miss it, goes miss, in as miss. well. Lord slam to the base. Oh my god, that's the Racing Center from the behind, but it will be Ethereum falling down. So do G Razy, they're locking down the base. We're gonna see that it's falling down as well. And it will be a win for the side of Team QE Nebula. The revenge is not so successful from Team Maverick because QE Nebula will still continues their pressure, their domination onto Team Maverick, and the story, the script will be follow as same, just like the last day at Algambo Esports Scrim on Monday, if I'm not wrong. And guys, with this, the Friday scrims are on, and for that you have the registration link in our website. So do follow our Instagram handle and Discord server so that you can get our website link into your hand. Join it, bring your team, register it, and get a chance to get featured at the MOBA Warmup Class series. Ray, why don't you end? Yeah, sorry. The MVP goes to Dominkite with 0 deaths, of course. And I believe this match, it started off good for Mavericks, but I don't know. I feel like Jirazi, I feel like the Beatrix was definitely. I mean, it's Scrims, right? I guess he's practicing the Beatrix. He was way too stuck up on the Bennett, like only rocket non-stop. He was not using the shotgun and the machine gun whenever he could have actually, fought back whenever they got too close, especially considering Atlas and the both. Who was the Phobius were in their faces. So I believe that is something that they can look into. And obviously this is not their end. This is just scrims. It's not an elimination round, so they can come back on Friday as well. And even you can give a chance against to face, maybe if you're a team you think you might be able to defeat QE Nebula's win streak, right? So if you think you got that, make sure you register at, of course, Algambo Esports, and you can get the link just like Ashley mentioned by joining our server. We post our announcements every day, so make sure you check it out. We have a lot of players in our server who are always looking for scrims. So if you're a competitive team who's still looking up at the sky and the stars, hoping to get, of course, in the big leagues, you can start from here. But with that, ladies and gentlemen, we will take our leave for tonight, but please do not forget to register for the scrims. We even have scrims open for HOK on Nerf Kings. If we get teams, of course, participating, we can host even more of them. So make sure you participate. And Friday one is already open. So we'll see you on Friday at MOBA Warmup Class Series, brought to you by none other than Algambo Esports, powered by kridox. Good night. Take care. See you at Friday.